Respected sirs, my dear guests and fellows, good morning and assalamu alaikum. I warmly welcome you all to the third National Hands-on Training Workshop on Basic Tools of Bioinformatics for Molecular Biology and Biomedical Research. We will start this auspicious event with the holy name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. For this purpose, I would like to invite Amir Bukhari to cite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وداك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاك الله. Jazakallah. To honor the one who is Rahmatul lil Alamin, the light of guidance and mercy for all of us, I would like to invite Saman Bashir to present a beautiful mark for our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habibullah. हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है, मोहब्बतों का सिला कौन ऐसा देता है,
करे गौर आपसे है हुजूर मेरी तो सारी। Subhanallah. I'm very much thankful to our respected Dean, Professor Amir Jameel, and all our guests and participants for being here today. I'm especially thankful to Dr. Mohammed Javed Iqbal, who has come across from Comsat Lahore and with his students to join us today just for this workshop. So please give him a huge round of applause. We hope to make this workshop very informative and interesting for all of you while providing hands-on experience to the participants and a deeper understanding of the subject matter. Ladies and gentlemen, we have with us our very honorable Dean, Professor Amir Jameel, who is a renowned academic and a leading figure in molecular biology and gene expression. He has mentored numerous students and played a pivotal role in advancing research at UAF. It is an honor for me to invite Professor Amir Jameel to come forward and say a few words for us. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Dr. Javed Iqbal from ComSets, Dr. Muhammad Ali, organizer of this event, dear students, researchers, Assalamu alaikum. I welcome all of you to this scientific event organized by the Department of Biochemistry. First of all, I appreciate Dr. Muhammad Ali and his team for this very important activity. I will go a little background of it. If you look at the history of biochemistry, it started from the history of enzymology, early part of the 19th century, emerged out of the organic chemistry. And then we find the discovery of 3D structure of DNA, Watson and Crick, and with that molecular biology emerged out of it. It was International Union of Biochemistry which was the biggest forum, and later it was it was transformed into International Union of Biochemistry and Molecular Biology. तो अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा जो फोरम है मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री IUBMB, ये एवरी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट आई थिंक शुड अवेयर ऑफ इट. उसकी एक कांग्रेस होती है हर 3 साल बाद किसी ना किसी कॉन्टिनेंट में. It was decided in 1990. अच्छा, जब ये with the advent of this Watson and Crick model, उसके बाद molecular biology start हुई. उसमें सबसे बड़ा challenge क्या था? वो था कि identification of a gene from the DNA, because size of the DNA is very very large. आपको पता है कि 3 billion base pair है. अगर आपको जॉब मिल जाएगी, आपने सुबह 9 बजे आना है और शाम 5 बजे तक ATGC सीक्वेंस पढ़ना है, तो एक दफा आप पूरा सीक्वेंस रीड करने के लिए आपको 80 साल लगेंगे, 80 years. दिस इज सो बिग जीनोम दैट इज प्रेजेंट. हैप्लॉइड जीनोम की भी बात कर रहा हूं. अगर डिप्लॉइड की बात करें 46 क्रोमोसोम्स की, तो इससे डबल होगा. और उसमें जो जीन साइज है दैट इज वेरी स्मॉल. तो इसकी अक्सर एग्जांपल दी जाती है कि इस तरह के 20 कमरे अगर आप वीट स्ट्रॉ से भर दें और उनके अंदर एक पिन ड्रॉप कर दें, तो हंटिंग ए जीन इज लाइक उस पिन को उस 20 बड़े बड़े कमरों के वीट स्ट्रॉ में से ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल था. तो लोगों की जिंदगियां लग जाती थी, 15-15 साल एक जीन को आइसोलेट करने ढूंढने में लग जाते थे. तो in US they finally thought about in 1990 Human Genome Project, which is the biggest project in the so far in the history at that time actually in the history of biotechnology of $3 billion. उन्होंने कहा जी 15 साल में हम इस पूरे जीनोम का सीक्वेंस करेंगे. डिफरेंट लैब्स दुनिया की वहां पे उन्होंने सीक्वेंस, खैर वो 13 साल में उन्होंने सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया. IUBMB की जो कांग्रेस थी यूके में 2003 में,
I also had opportunity to visit that as well at that time. वहां पे उन्होंने अनाउंस किया फर्स्ट ह्यूमन जीनोम का ड्राफ्ट. अच्छा, जब ये इससे क्या बिल्ड हुआ, व्हाट इमर्ज्ड आउट ऑफ इट, जैसे बायोकेमिस्ट्री से मोलेकुलर बायोलॉजी से बायोइंफॉर्मेटिक्स, सुपर कंप्यूटर्स आ गए, बायोइंफॉर्मेटिक्स डेवलप हुई. अब हमारे पास जो जीनोम सीक्वेंसेस हैं वो मोस्टली बहुत सारे प्लांट्स के, एनिमल्स के जीनोम सीक्वेंसेस. अब बैक्टीरियल जीनोम सीक्वेंस तो मसला ही नहीं रह गया. जैसे इकोलाई का 4.6 मिलियन बेस पेयर है, वो एक दिन में हो जाता है. नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक्स आ गई. तो अब हमारे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स भी जीन आइसोलेट कर सकते हैं विद इन 2 to 3 वीक्स के टाइम में. आप कर सकते हैं अगर फैसिलिटीज अवेलेबल हों, जो कि 10 से 15 साल चाहिए होते थे. वो कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू दिस बायोइंफॉर्मेटिक्स टूल्स. दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्कशॉप. हमारे जो जितने भी बायोलॉजिकल साइंस के ग्रेजुएट्स हैं आगे, फॉर टू बिकम इंटरनेशनली कॉम्पिटेंट, यू मस्ट नो these bioinformatics tools, how to implement that. और इससे पहले ये होता था कि एक पीएचडी थीसिस जो है उसमें 4-4 साल लग के कोई एक छोटी सी एक प्रोटीन निकाली. अब हम स्टार्ट ही, अभी मेरे एक स्टूडेंट है, वो yesterday she went to UK for IRSEP प्रोग्राम कोलैबोरेशन में, तो स्टार्ट ही हमने 3000 प्रोटीन से किया है. 3000 प्रोटीन से हमने नैरो डाउन करके हमने 3 या 4 फाइनल की हैं. उनको हम अब लैब में टेस्ट कर रहे हैं. तो उससे क्या टाइम की बचत हुई और कितनी ज्यादा ह्यूज हमारी बचत हुई उसमें इकोनॉमिकली, कि हमने 3000 प्रोटीन्स टेस्ट कर ली 6-8 महीने के अंदर बायोइंफॉर्मेटिक्स टूल्स के जरिए, और नैरो डाउन करके एंड ऑफ द डे यू मस्ट हैव टू गो टू वेट लैब. उसके बगैर तो नहीं है. लेकिन आपने 3000 में से जब 3 नैरो डाउन किए हैं तो वो 3000 वाला काम जो है वो, वरना वो पॉसिबल नहीं था. कितना उसके लिए लोग चाहिए थे, कितनी उसके लिए वो फैसिलिटीज चाहिए थी. तो इसलिए मैं डॉक्टर अली और उनकी टीम को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने ये इतनी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप सीरीज है, ये हर साल करवाते हैं. और इसकी खास बात है कि जो बातें मैंने कल की थी, अगर जो कल वाले लोग यहाँ बैठे अगर हैं तो वो यही बातें, मैं ज़ाहिर है इसमें रेपिटेशन है, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया था इनका. We have a long history of international conferences, seminars, workshops, symposia, और खास तौर पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स हमारी एक खास कह लें कि सिग्नेचर है हमारे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का. हम पीसीआर पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराते हैं जिसमें 10 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेते, 8 से 10 स्टूडेंट, ताकि रियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. और यही कॉन्सेप्ट इसमें रेप्लिका वर्कशॉप में, अब इनको टाइम भी देना पड़ा, 2 दिन लगाए, बजाय इसके कि एक दिन में ज्यादा सारे पार्टिसिपेंट्स. कल भी आप जितने पार्टिसिपेंट्स थे और ऑनलाइन भी होंगे, आज कितने, आज भी ऑनलाइन होंगे, 50 ऑनलाइन है. तो बजाय इसके कि हम एक दिन में कराते हैं, उसमें यह है कि इसमें आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आंसर, तो आपने क्या करना है कि यू शुड गेट मोस्ट आउट ऑफ इट. ठीक है. डॉक्टर अली जो है, ही हैज अ वेरी स्ट्रांग नर्व्स. स्टूडेंट्स जो है इनसे परेशान रहते हैं. क्यों परेशान रहते हैं? कि ये हमें काम बहुत कराते हैं. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनसे कितना फायदा ले सकते हैं. और मैं अप्रिशिएट करता हूं डॉक्टर जावेद और उनकी टीम को, कॉमसर्ट्स के स्टूडेंट्स को. दे हैव कम ऑल द वे इन द मॉर्निंग फ्रॉम, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप 9:30 तक पहुंचेंगे. यू गॉट अर्ली, इट्स गुड एंड वी वेलकम ऑल ऑफ यू. और ये अच्छी बात है कि आप वहां से, ये नजर आता है कि आपकी अर्ज फॉर दिस, स्टूडेंट्स की अर्ज फॉर लर्निंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट. और अब आप आए हैं तो डॉक्टर अली तो पैराडोल की गोलियां भी साथ लेके आए हैं कि अगर किसी को मसला होता है या और चीजें तो. लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि आप, ये प्यासा जो है ना वो कुएं से कितना हासिल कर सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है. तो ही हैज रियली ह्यूज, मैं इनके सामने इनकी ज्यादा तारीफें नहीं करना चाहता, बट ही हैज अ गुड, इनके पास बड़ी अच्छी ट्रेनिंग. इनके स्टूडेंट्स को के बाद शिकायत करते हैं कि हमें बहुत काम कराते हैं, लेकिन दे आर वेल वर्स्ड ऑफ एडवांस टेक्निक्स. तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनसे कितना फायदा उठा रहे हैं. अगर आप कहेंगे जी हम 1:30 बजे, आप कहेंगे हम थक गए, तो इनका तो कोई मसला, अच्छा ठीक है जी बस करते. अगर आप कहेंगे 5 बजे तक लेके जाना, हमें ये भी सिखाएं, हम आगे हैं, वी हैव अ थर्स्ट फॉर दिस, तो ही इज हियर.
ये आपके साथ अवेलेबल है और डॉक्टर जावेद साहब भी हमेशा से इस तरह ही हैं, ये भी वो थकने वालों में नहीं है, ये भी आपको जो है ना जितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हो. आई होप in the end, I congratulate Dr. Ali and his team for organizing, and I am thankful, and I welcome again Dr. Javed Saab and the students from there and other participants. और मेरे ख्याल से आप इसमें से, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि हमने 3000 प्रोटीन से स्टार्ट करके 3 निकाली हैं जिनको हम वेट लैब में टेस्ट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे कुछ. तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि आप आम जो छोटा मोटा प्रोजेक्ट है ना, बीएस लेवल का, इवन एमफिल लेवल का भी अगर थोड़ा अच्छी बायोइंफॉर्मेटिक्स कर लें तो आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं. तो ये अगर तो कोई लोगों को पहले से आइडिया है वो उनके लिए एडवांसमेंट होगी, जिनको नहीं है उनके लिए नई विंडोज ओपन होंगी. और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई हाई फाई लैब रिसर्च आपकी फैसिलिटीज नहीं चाहिए, एक अच्छा आपके पास लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए. तो आई होप कि इससे आप बेनिफिट लेंगे मैक्सिमम. विद दीज आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir. Now I would request Sir Javed Iqbal to please come forward and say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. It's really honor and privilege for us to be here to join this workshop, and I really appreciate the effort of Dr. Amir Jamil Saab in the department as a head and as a dean now, and Dr. Ali for all this activity, to organize all this activity. मेरा जो एम था इसको ज्वाइन करने का, एक्चुअली मुझे ये मेरे बच्चे आए हैं मेरे साथ स्टूडेंट्स, ये बायोकेमिस्ट्री वहाँ पे एनरोल है मेरे साथ, पीएचडी कर रहे हैं केमिस्ट्री में हैं, और एक कोर्स है एडवांस बायोकेमिस्ट्री का, वो मैं इनको पढ़ा रहा हूँ. उसमें फिर ये टॉपिक था, तो हमने कहा क्यों ना हम ज्वाइन करें जाके और इसको लर्न करेंगे इंशाल्लाह वर्कशॉप में. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर. बट इट्स ऑलवेज प्रिविलेज एंड ऑनर टू ज्वाइन माय ओन यूनिवर्सिटी. यहीं से पढ़े हैं, यहीं से पढ़ के गए हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कॉमर्स यूनिवर्सिटी एबटाबाद एंड देन लाहौर में अब मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट में. तो मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे आने की और यहाँ पे अपने कोलीग्स को मिलने की और लर्न करने की कि मेरे साथ मेरे अब स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए और आपसे ये इंटरेक्ट करेंगे. इंशाल्लाह सेशन जब ऑफ होगा तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से ये इन्होंने क्या लर्न किया और आप इनको क्या किस तरह से वेलकम करते हैं, और सारी एक्टिविटी इनके साथ शेयर होगी. आई अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir. Now I would request the respected teachers and all my guests to please come forward for a group photo. So our first session today, so online attended, they are listening my voice, online participants. Online के check करना, आ रही? Okay. So our first session today is about the PCR. Primer designing using the tools of bioinformatics. So we'll start today. So some of you may be the newcomers, so from very basic definition I'm going to start. So PCR already you know is the abbreviation of the word the polymerase chain reactions. The PCR stands for the polymerase chain reactions. So what is its purpose? It is used to make huge number of copies of our desired DNA fragment. The starting material for the PCR is the gene or the fragment of DNA. So it can amplify in a million-fold to a copy of DNA in a matter of hours. So what way it amplifies?
So one strand of DNA is duplicated into 2 copies, then the 4 copies, then the 8, then the 16, then the 32, and then the 64, then the 128. This way, after every cycle, the DNA is duplicated. So there are 3 actually steps that are called the principles of PCR. There are 3 steps. The first is the denaturation step. Denaturation step is carried out at 94 degrees centigrade. What is happening? The DNA is double stranded. At 94 degrees centigrade, it is converted into the single strand. Then comes the next step, that is called the annealing phase, that is performed at 55 to 60 degrees centigrade. In this step, the primer binds to both the strands, both the denatured strands, DNA, the primer binds. And then comes the extension phase, and the DNA polymerase actually extends these primers, and from one fragment of DNA, one copy of a gene, there are 2 copies are made. So you can see these steps here. 94 degrees centigrade is denaturation phase, and then comes the primer annealing phase, and then comes the extension phase. These 3 steps are called the principle of PCR, and they are repeated usually 30 to 35 times. And during this time, 1,000,000 copies are made. So there is another extra time, 94 degrees centigrade for 5 minutes. This is given when we want to amplify a gene from a whole human genome. Initially, genome is very big. That's why initial denaturation time is given for a bit longer time. But within cycles, it is given only for 30 seconds. And at the completion of these cycles, there are a lot of copies are made, but some of the fragments may not be completely made. So any of the incompletely amplified fragments, we give an extra time of 72 minutes for 5 minutes, 72 degrees centigrade for 5 minutes. This is the extra extension time, and this extension temperature is within the steps of these cycles. So what the reagents are required actually? What the reagents are required for the PCR? So the deionized water, the PCR buffer is required, the magnesium chloride, DNA polymerase, DNTPs, the primer is required, the template, and the modern PCR also include the dye within the PCR reaction. So water definitely is required to perform the reactions. Almost all reactions, whatever are happening in our body, almost all are carried out in the water as a media. Water as a media is used. And PCR buffer in the PCR reaction is used to maintain the pH. And the magnesium chloride helps the binding of primer and the binding of DNTPs. And the DNA polymerase is just like the mason. Mason builds the wall with the use of bricks, and the bricks are the DNTPs. So this way, when the primer binds, so the new bricks are added. These new bricks are added with the help of DNA polymerase, and DNTPs are the similar to the bricks. And the primer provide the starting and the end point. Primer provide the starting and the end point of the fragment to be amplified. If we want to amplify this fragment, we have to design the primer in this range. Start point and the end point. Primer gives the start and the end point. And template DNA and the dye. Sometimes dye is also included in the modern PCR reactions. Usually, Fermentas gives all these reagents separately. Some institutes separately use all these reagents, and some are using them in the form of mixture that comes as 2x premix. 2x premix is used. So for everything we check what the function. For the PCR buffer usually it provides the pH. I already told you, and the pH usually of the PCR buffer is 8.8, and it is usually the ammonium sulfate kind of buffer. Ammonium sulfate kind of buffer. This is the PCR buffer, and the template DNA usually is used at 50 nanogram concentration, and sometime, but I most of the time use the 100 nanogram for the reaction. But the bookish knowledge tells 50 nanogram is enough for the PCR reaction. And the magnesium chloride, its concentration usually is used 2.5 millimolar. Every reagent must have a optimized concentration
to carry out the PCR. And the most important thing today is about the PCR primers. So the PCR primers, they provide the starting and end point. I already told you, if we want to amplify that much fragment from a bigger fragment of DNA, we have to design the primer at the start and at the end. For example, this is the forward primer. I write here F and I write here R. So within this forward and reverse, the fragment will be amplified. And the primer concentration usually is kept at 0.1 to 1 micromolar. This is the primer concentration. Primers are usually 18 to 25 nucleotide long. Primers should have 40 to 60% of the GC contents. You already know there are 4 kinds of bases. I am not sure whether the undergraduate students are also here. So A, T, G, C. 4 kinds of nucleotide bases are making the genome of every living organism. 4 kinds of DNA bases are making genome of every organism. So GC content must be 40 to 60% within the primer. Primer should not be self-complementarity. Primer should not be making the hairpin, and there should not be more than 380 bases at the 3' end. So I let you know, whenever we write the DNA sequence, whenever we write the DNA sequence, we always write from 5' to 3'. At the 5' there is a phosphate group free, at the 3' there is a OH group free. So I make here. So at the 3' there is one OH group free. So DNA sequence is always read from 5' to 3'. It is always written from 5' to 3'. It's always written from 5' to 3'. When the primes are not mentioned, it is understood from left to right, it is 5' to 3'. So at the 3' there should not be more than 280 bases. At the 3' there should not be more than 3 GC bases. And the melting temperature of both the primers should not differ from each other by more than 5 degrees centigrade. So these are all characteristics required to design a primer. 40 to 60% GC contents. Primer should not be self-complementarity. Primer should not be mutual complementarity. Primer should have 40 to 60% GC content. Primer should not make the hairpin. And there should not be more than 280 bases at the 3' end. And primer should not have more than 3 GC bases at the 3' end. So these are all qualities a primer must have. And the DNTPs usually are used at 200 micromolar concentration. And the DNA polymerase usually for one reaction, 1 to 1.5 units are enough for one reaction. So DNA polymerase usually 1 unit is enough for one reaction. So we talk here, this is the same primer. This is for example the forward primer TTT, and we can also see here TTT. This is the same primer. If the same primer is binding to itself, it is called the self-complementarity. So primer, if they are binding to each other perfectly everywhere, they then will not bind to the DNA fragment. They will bind to each other. The forward primer is binding to forward primer. So then they will not bind to the DNA fragment. So the primer should not be self-complement. When designing the primer, we take care. The primer should not be self-complement. And also, we can see here, there is another case. This is, for example, the forward primer. This is the reverse primer. We see here, if there are many complementary sites on the forward and the reverse primer, for example, they are complement to each other. So the forward primer will bind to reverse primer, but they will not bind to, again, the DNA fragment. So the primer should not be mutual complementarity. Okay, there is another important point. There is another important point that the primer should not be making the hairpin. If the primers are making this kind of hairpin, for example, they are complementary sites, then the primer will bind to the DNA fragment, but it will make a hairpin. It should not be making the hairpin. It should not be making the hairpin. So this is another requirement for the primer. So I designed here an example for you. I counted these 130 bases for you. I made a few days ago. These are 130 bases for you, and 130 bases are only shown, but the fragment is extended in this direction. Definitely, this is long fragment. This is long fragment. But only I'm showing you 130 bases. And my purpose is to amplify these 130 base pairs.
So what I do, in order to design the forward primer, I will simply copy 20 mers from the top strand. So whatever genome databases are there, they usually give the sequence of top strand. Whatever databases are there, like the NCBI, like the Ensemble. So they give usually the sequence of top strand. So top strand I'm making to distinguish in black color, and the bottom strand I'm showing you in the blue color. And if I want to design the forward primer, I will simply take the 20 mers from the top strand, and this will serve as a forward primer. And if you want to design the reverse primer, what will I do? I will copy the 20 mers from the end point. This is the, for example, start point of the amplification, and this is the end point of the amplification. I will take 20 mers from the end point, and I will take its reverse complement. When I will take the reverse complement, it will be made as a, it will serve as a reverse primer. So reverse primer is the reverse complement of the top strand. So reverse primer is the reverse complement of the top strand. So what is happening? So when I copied here the 20 mers from the start point where we want to start the amplification, this forward primer will bind to the bottom strand, and the reverse primer that I designed will bind to the top strand. So forward primer binds bottom strand, and reverse primer binds to the top strand. So I'm here going to show you examples. For example, the first of all, this is a double stranded DNA. I applied the temperature 95 degrees centigrade. It is melted into single stranded DNA now. You can see they have been melted. They are far apart bit. Now, I applied another temperature like 50 degrees centigrade, 58 degrees centigrade. The forward and the reverse primer have bound. Forward primer had bound to the bottom strand, and the reverse primer has bound to the top strand. And then I applied the third temperature, the extension temperature. So what will happen? This polymerase will have an activity at 72 degrees centigrade, and they bind to the 3' end. Keep in mind, DNA polymerase always bind to the 3' end. The 3' end always have OH group free. So keep in mind, the DNA polymerase binds to the free OH group, 3' end of the primer. Because the 72 degrees centigrade is the optimum temperature, so it will start its activity when binds to the 3' end of the primer, and in the same way to both to the reverse and the forward primer. This blue highlighted bubble I'm showing you as a DNA polymerase. And for example, this primer, this DNA polymerase extended this fragment in this direction, and the polymerase that was here, it extended in this direction. So DNA polymerase has the polymerase activity this way. So this way, after one cycle, one fragment of gene has been duplicated, 2 copies are made. And you can see one this way, 1 copy, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. This way, DNA is amplified. So importantly, as a life scientist, the important thing is to know the notation of the gene and the protein. In all research articles, it is never mentioned, for example, the BRCA gene or EI24 gene, but their symbol, the notation, the convention is mentioned, and you have to understand whether it is written the gene or whether it is the protein. For example, gene of all our living organisms are written in italic. You can see the symbol of the gene of all species is written in italic. In paper, it's never mentioned it is gene or it's mRNA. The gene, mRNA, siRNA, shRNA, they are all written in italic. But the human gene, for the human gene, all letters are capitalized. But for the mouse gene, first letter is capitalized, rest are kept small. You can see. For example, EI24 gene is both present in human and the mouse. Because I'm working only on 2 species majorly, the human and the mouse samples I deal. So that's why I'm giving you example from my own research work. For the human, all letters are capital and italicized. Italic means gene,
Capital all letters mean human gene. Only first letter is capital, rest are small. It means the mouse gene. It means the mouse gene, right? And for the protein, all letters are regular. And for the protein, all letters are regular and capital. All letters are regular and capital. For who? For the protein. This means human protein and the mouse protein cannot be distinguished, but we understand whether it is written the protein, human or the mouse from the context. We understand from the context. And this is the full name. And this is the full name of the gene or the protein. This is the full name of the gene. This is full name of the gene. This way we must understand the notation. In the research article, it's never written. It is gene or the protein, but by convention. So these students are from which institute? Okay, we welcome you all. You came together. You came all together in the form of group. Okay. So we were talking about the notation. We have not done much, but all the hands-on practices still remain. So you will be with us, and please provide Shan them the electricity so that they can turn on the laptop, because we need laptop all day long. So in the meantime, you can connect to the internet and install the software till the time I'm telling you the theory. Then we will start together the hands-on practice. एक नया बोर्ड लगा दें इनको, बच्चे जहां बैठे बैठे रहें वहीं पे, जहां इजी है. गाड़ी में बोर्ड काफी सारे पड़े हुए, नया वाला ना ले, नया ले. So we are continuing. Just like previous slides, top strand I intentionally made black and the bottom strand the blue, so as to distinguish, so as to give you the concept. So top strand has several names. Sometimes the top strand is called the plus strand. So we are not confused when written in the literature. We must know how to name the top strand. Sometimes top strand is named as the coding strand, sense strand, the non-template strand. And the bottom strand that has been shown in blue intentionally to distinguish, it is sometimes called the minor strand, template strand, non-coding strand, and anti-sense strand. These are all names for the bottom strand. These are all names for the top strand. And in the genome databases, almost all the times, the sequence of top strand is given. Sequence of top strand is given. Sequence of top strand is given. And when the transcription starts, so the previous slide I have once again explained, because several of our students in my experience don't know the notation about the gene and the protein. So I explain this slide once again. In the research articles, it is never mentioned this is EI24 gene or whether it is EI24 protein, whether it is EI24 mRNA. For the notation, the convention for the notation of the gene are always written in italic. Genes are always written in italic. Not only the gene, before the protein, whatever species is made, before the protein, whatever species is present, those all names are written in italic. Their names are written in italic. For example, gene name, mRNA, siRNA, shRNA, microRNA, whatever it is, their names are written in italic in all research articles, whether it is Cell, Nature, Science research article. And for the human gene, not only the italic, but all letters are capitalized. All letters are capitalized. Not only italic, the human gene, not only italic, but all letters are capitalized. For the mouse, italic still, for the gene name, but only the first letter is capital, rest are small. If somewhere italic EI24, this is written, it means this is mouse gene or mouse mRNA. If this is written somewhere, human gene or human mRNA. Because I'm most of the time working on the human and the mouse only. That's why I'm giving you only example of human and mouse. Rest of the example, whatever you do research on, you can find for your own species or organism. And for the protein, so all are capitalized and regular they are written. For the protein, we cannot distinguish the human protein or the mouse protein. So this notation, this thing I explained for the newcomers. We will be continuing. And for the top strand, I have given you different names. All of you, I guess, have downloaded already this PPT. This PPT have already been sent to all of you, and also is present in the folder. The name of the folder is download research material or research workshop material, I think, workshop material. For the top strand, it's sometimes named as a plus strand, non-coding strand, this way. And whenever transcription starts,
When the transcription starts, actually bottom strand is taken as a template. When the transcription is started, bottom strand is taken as a template. When the transcription starts, bottom strand is taken as a template, and the transcription starts this way. Before I talk more about transcription, I want to tell you top strand and bottom strand, they are running in anti-parallel direction. Because the top strand is running from 5 to 3 prime in this direction, the arrow is shown here, and the bottom strand is running in this direction. Bottom strand, you can see arrow is on left and the top strand is on right. From very simple and very basic information, we inshallah will go into the more advanced things. You don't worry, because I don't know the background of most of the students, so that's why I started from the basics. They are running in anti-parallel. When the transcription starts, the bottom strand is taken as a template, and the transcription starts this way, this way. So when the bottom strand is taken as a template, the mRNA made is run anti-parallel to the bottom strand. This way you can see, and the mRNA that is made has exactly same sequence as top strand except U40. Whenever we take the coding sequence from any of the database, that is actually the sequence of mRNA. Whenever we take the coding sequence of any gene from the databases, that is actually the sequence of mRNA except U40. So you have not, I think, connected to the network. So I show you different networks you connect, because right now we are going to start the hands-on practice. Some of the basic concepts I try to give you. So some of you may connect to any of these networks. If one is not connected, please try another one, and then we will start. So you can send the link of this online training, so your friends can see you from anywhere in this world. This is free for all over the world, this training. So we continue. You have connected. So the question, bit related, we see so the respected Jabir Saab from Comsets Lahore, he is asking, so he is working on the gelatin. So if the gelatin is coming from different sources like donkey, mouse, or something, pig, so how can he distinguish different kind of gelatin? For example, I let you know clearly that, for example, this is the pig gelatin. This has this specific sequence. Okay, so all of you please open the Google and write the NCBI, please. These are small tools. Everyone, maybe some of you may be aware of these things, but we will at least practice one time today. This is Google and NCBI, and please click the first link. So anyone has come across with this page? Okay, good job. So please click this drop down menu and select the gene, and write here the EA24. EA24 is the name of a gene, EA24. So some of my students are around you. If you face any problem, please ask. And click somewhere here. There is some button. Click OK or go. Please click. And do you see this kind of page now? Okay. You see this kind of page now. And this is the, you can see E capital I capital 24. And it is written EI24 autophagy associated transmembrane protein Homo sapien. The human EI24 protein. Please click this one. So wherever there is a green arrow during or throughout this presentation, it means we have to click that point, green arrow. I'm using the same color of arrow. So when you click this one, so new page is open.
Do you see a new page? Please search new. This page is open. This page is open, right? They have just arrived, so they will slowly start. I go back, no problem. So NCBI in the Google, and the first link we clicked. And then the gene we selected from the drop down menu, and we wrote EI24. And then we click go, and then this page is opened, and we will click EI24 first, Homo sapien protein. Our next page will open. Please scroll down the next page and the search GenBank word. Please search. After clicking this EI24, a new page will be opened, and when you scroll down, GenBank will be written. So if you cannot find GenBank on the next page, please Control F and GenBank. It will quickly take you to the. हुआ GenBank किसी को मिला? इधर मिल गया? Good job, good job. जी, उमर यार हेल्प करो यार. आपने ना ये कंट्रोल है ना, कंट्रोल F कर लिया करना है. ये रहा GenBank. देखिए सेम वाला है ना GenBank, आप बोला इसको क्लिक करना है. GenBank आपको मिल गया? अच्छा, आप कोई दूसरा नेटवर्क लगा लें और मैं इंटरनेट की एक दो स्लाइड दोबारा दिखाऊं, आप तस्वीर बना लें फिर दोबारा लगा लीजिएगा. है अच्छा जी. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैं इंटरनेट पेज की स्लाइड एक बार फिर दिखाता हूं, पिक्चर बना लें, फिर एक से दूसरा नेटवर्क ट्राई कीजिएगा. यू अंडरस्टैंड राइट ना? मैं थोड़ा सा आपसे पूछता रहूंगा, GenBank पे कौन को पहुंचे? इधर से कुछ स्टूडेंट GenBank पे पहुंच गए हैं, इधर से भी पहुंच गए हैं. वेरी गुड जॉब, वेरी नाइस जॉब. व्हेन यू क्लिक द GenBank, न्यू पेज विल बी ओपन. क्या ये देख रहे हैं आप ऐसा पेज? गुड जॉब. यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ना, यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है. क्या दी गई है? यहां पे जीन का देखें दिया गया है, कितने बेस पेयर का है. देखिए कितना है जी, 15,208. 15208 बेस पेयर लॉन्ग है जी. ये इसका जो एनसी लोकस है, ये क्रोमोसोम में किस लोकेशन पे ये जीन मौजूद है. हमने EI24 से काम शुरू किया था, इसमें बेशुमार इंफॉर्मेशन है. अब इस पेज पे हमने एक वर्ड ढूंढना है, ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 1. यहां पे लिखा हुआ है, ये ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 1 लिखा हुआ, देख रहे हैं ना आप ग्रीन पे. ये वाला वर्ड हमने ढूंढना, ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 1. प्लीज ढूंढिए, कंट्रोल F करके वेरिएंट 1 लिखें, वेरिएंट स्पेस 1. हम बेसिकली करने का जा रहे हैं, हम NCBI से किसी भी जीन का सीक्वेंस, उसका कोडिंग सीक्वेंस निकालने का तरीका देखने जा रहे हैं. फिर वो सीक्वेंस निकाल के हम प्राइमर डिजाइन करेंगे. उसी से हम एक डेटाबेस से सीक्वेंस निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं NCBI से. And we are searching this transcript variant 1. If you search this transcript variant 1, there is a specific NM number. NM number. ये NM नंबर जो है, ये उसके पास लिखा हुआ वेरिएंट 1 वाले NM नंबर में जाना है. आप वरी नहीं करें, आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको. और इस पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, पीपीटी मिल चुकी है ऑलरेडी आपको. NM नंबर किस किस को मिला जी? वेरी गुड जॉब. प्लीज इसको क्लिक कर दें, NM नंबर को इसके ऊपर क्लिक कर दें. ये NM नंबर में बोलने लगा हूं इंटेंशनली, 004879.5. इसको क्लिक करने से, क्लिक कर दिया सबने जी? अच्छा, अब इसके पास एक CDS वर्ड लिखा हुआ है, CDS. CDS पे प्लीज क्लिक कीजिए. CDS. हाँ, NM नंबर पे क्लिक करने के बाद CDS पे क्लिक करना है. पहले NM नंबर पे क्लिक करना है, फिर CDS पे क्लिक करना है आपने. जब आपने क्लिक किया, ये किस किस को नजर आ रहा है? इस तरह का हाइलाइटेड रीजन है, दरमियान में हाइलाइटेड है, साइडों पे नहीं है. ये जो हाइलाइटेड रीजन है बेसिकली, ये जो हाइलाइटेड रीजन है बेसिकली, ये EI24 जीन का कोडिंग सीक्वेंस है. दिस इज कोडिंग सीक्वेंस. एंड फॉर द ह्यूमन, फॉर द एनिमल कोडिंग सीक्वेंस, द फर्स्ट कोडान always start from ATG. You can see the first 3 letters are ATG in the highlighted region. First 3 letters are ATG in the highlighted region. So this is the identification, this is the coding sequence. For every gene it starts from ATG. Whatever genes you have, 3 billion base pair you have, 20,000 genes you have, their first codon is ATG.
And the last codon is the stop codon, usually TGA or TAG. Last codon देखें highlighted में क्या है, TGA है या TAG होगा. So this is the stop codon. यहां से लेके यहां तक प्रोटीन बनने का ट्रांसलेशन का अमल होगा. तो आप इस रीजन को कॉपी कर लें केयरफुली. Only the highlighted region may please be copied, not other extra bases by the use of your cursor. And I have already provided you one Word file in the workshop material. If you have not downloaded, please copy the sequence in a new Word file, it's fine. If you have already opened that file, then that is even fine. In a separate Word file, I want to see this kind of coding sequence of the ATG, of the EA24 coding sequence. Welcome. आपने लेगेसी फाइल में कॉपी करके रख लिया इसको जी? जी. अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं. अब हमने इस सीक्वेंस को यूज करते हुए प्राइमर डिजाइन करने हैं. तो हम क्या करेंगे, हम एक सॉफ्टवेयर ऑनलाइन टूल यूज करने जा रहे हैं. आप गूगल खोलिए, एक नई टैब प्लीज. जी, स्लो डाउन हो जाते हैं जी. ठीक ठीक. किस स्टेप पे पीछे जाऊं? सोहा में किस स्टेप पे पीछे जाऊं? यहां पे रुक जाऊं. अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, यहां पे रुक जाते हैं. और हमें जल्दी कोई नहीं, हम सीखे बगैर नहीं जाएंगे, आपने वरी नहीं करना, क्योंकि ये कोडिंग सीक्वेंस हमने कॉपी कर लिया है. सीडीएस पे क्लिक करने से हाइलाइटेड रीजन आ गया था, अपीयर हो गया था. तो ये कोडिंग सीक्वेंस आ गया है. इसकी शनाख्त क्या है? एटीजी से स्टार्ट होता है, टीजीए पे खत्म होता है. वो देखिए टीजीए आखिरी तीन जो है बेसिस टीजीए हैं. स्टॉप कोडॉन. गूगल में जाइए और प्लीज लिखिए एनसीबीआई प्राइमर ब्लास्ट. प्लीज ओपन अ न्यू टैब इन द and write in the Google NCBI primer blast. And after this kind of search is completed, please click the, you can come across this kind of window, right? Because you already copy the coding sequence of EA24, it still is in your clipboard. So please click here and press Ctrl V. EA24 सीक्वेंस यहां पे भी आ जाएगा जो वर्ड में पेस्ट किया था, अगर आपने बीच में कोई चीज और कॉपी नहीं की तो. कंट्रोल भी किया, ये सीक्वेंस आपके पास आ गया है. ये देख सकते हैं इस तरह आ गया आपके पास क्या सीक्वेंस. मैं यहां रुक जाता हूं, जब सारे करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे. यहां तक आ गए क्या हम? गुड जॉब. अच्छा, अब ये कि हमने चूंकि ये है ना 1023 बेस पेयर का ये कोडिंग सीक्वेंस है. मुझे थोड़ा सा याद है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रटा लगाना जरूरी नहीं है. ये टोटल जो कोडिंग सीक्वेंस जो हाईलाइटेड था ना ब्राउन में, ये 1023 बेस पेयर का है. मैं ये चाहता हूं कि प्राइमर जो फॉरवर्ड डिजाइन करना उसका मैं रीजन दे सकता हूं. जैसे यहां से लेके 1023 बनता है, ये अगर 0 है 1023 का, मैं ये कहता हूं 1 से 500 तक के दरमियान फॉरवर्ड प्राइमर डिजाइन कर दे, और 501 से 1023 के दरमियान कहीं पे भी रिवर्स प्राइमर डिजाइन कर दे. सो वॉट एवर सुटेबल लोकेशन दिस सॉफ्टवेयर फाइंड्स, please design the forward primer in this region and reverse primer in this region somewhere in this region. I gave the proximity at the location of my forward and reverse primer, but I also give some extra conditions. मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी देनी है यहाँ पे इस पेज पे. हम इसी पेज पे हैं सारे के सारे लोग, अभी क्लिक नहीं किया हमने. नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी देनी है. जैसे मिनिमम जो है, जो सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन लिखा हुआ है, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम प्राइमर डिजाइनिंग का, 100 मिनिमम हो जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट जिसके अगेंस्ट प्राइमर डिजाइन करने हैं, और मैक्सिमम 300 हो. बट इन माय एक्सपीरियंस आई ऑलवेज विल रिकमेंड यू नेवर डिजाइन ए प्राइमर लेस देन 120 बेस पेयर. तो इस 100 की जगह पे 130 कर दें, तो जो आपके प्राइमर डिजाइन हो वो 130 से लेकर 300 बेस पेयर तक के फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करें. यहां 130 लिख दें, यहां 300 रहने दें. तो 100 इज नॉट फाइन. 100 क्यों नहीं फाइन? क्योंकि आमतौर पे जो प्राइमर डायमर होते हैं, जब हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे आर यूजुअली एट 100 बेस पेयर्स और लेस देन 100 बेस पेयर्स. something diversities are in the bottom. So we want our band, amplified band, should not mix with those primer dimers, but should be bit upward. तो 130 बेस पेयर से छोटा प्राइमर आमतौर पे आपने डिजाइन नहीं करना. 130 बेस पेयर मीन the fragment that is amplified by those primers should not be
लेस देन 120, ठीक है 130 लिख लिया हमने। और हम नीचे आएंगे, नीचे आके जी आप क्या करेंगे, यहां पे नीचे गेट प्राइमर लिखा होगा, नीचे क्लिक कर दें, कहीं लिखा देखें नीचे जी जी, हाँ अच्छा ओके। सो we pasted the sequence of A24 here, and we want to mention that forward primer may be designed from 1 to 500 base pair in this region somewhere, and the reverse primer may kindly be designed, we are saying to the software 50121023, its maximum length is 1023. We give some area of action to the software for the designing of forward primer and for the designing of reverse primer. So reverse primer will never be designed in this region because we have mentioned already the region. And we also mentioned to the software that please my primer should be designed in a way that they must be amplifying a fragment from 130 to 300 base pairs. I want that much fragment to be amplified from this gene. Please design primer in this way. For example, this is the full gene. I'm again making for you 1023. If I design primer somewhere here, that much fragment will be amplified. For example, that is 200 base pair. This is the primer that determines how big the fragment will be amplified. Which primers? The forward primer and the reverse primer. The forward primers and the reverse primers. They determine how big the fragment will be amplified. I have mentioned to the software, please amplify within this range. Design primer in a way. And one more thing, important thing, the primer should have the melting temperature minimum 57 degrees centigrade, maximum 63 degrees centigrade, and optimum 60 degrees centigrade. So when a primer binds, for example, this is the bottom strand I have made for you, and I'm showing you the binding of one primer. So the temperature at which the bound primer is detached from the fragment is called the melting temperature. The temperature at which the bound में जुड़ा हुआ, the bound primer is detached from the fragment is called the melting temperature, and its notation is Tm. Its notation is Tm. Its notation is Tm. And if I want the primer to bind to the fragment, so the temperature should be 3 or 5 degrees centigrade below Tm, because at Tm it will be detached. For example, Tm is 62 degrees centigrade, then the primer may bind to the template at maybe 59 degrees centigrade, below the Tm. Below the Tm. As the temperature increases, the fragments are detached. Which fragments we are talking about? DNA fragments we are talking about today. We will mostly be talking about DNA gene, DNA gene, DNA gene. So after selecting these parameters, we will click OK. Somewhere written is OK in the bottom. नीचे लिखा हुआ कहीं, नीचे स्क्रॉल करें, गेट प्राइमर पे क्लिक करते हैं. किसी ने गेट प्राइमर पे क्लिक किया, नीचे लिखा था, ठीक है, शाबाश. वो प्रोसेसिंग करेगा, कुछ टाइम लेगा आपसे, प्रोसेस हो रहा है, गुड जॉब. नो, इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपेरिमेंट. इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपेरिमेंट. जी, तो रिस्पेक्टेड सर की तरफ से क्वेश्चन है जो हमें लर्निंग में फायदा मिलता है, सीनियर मेरे हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन द एरिया for the designing of forward primer from 1 to 500 base pairs. Is it important? So answer is, it depends upon your experiment. It depends upon your experiment. And for all life scientists, I want to let you know the most important thing in the life sciences is the designing of experiment. If you take 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 6 months for the designing of experiment, it's no problem. But once if you have some mistake in the experimental design,
then whatever 10 years or whatever years you spend on doing the experiment, you can go nowhere. Designing of experiment is very, very important. Just in a way, you selected the coding sequence today of EI24 for the transcript variant 1 today. You selected, I saw. I was with you, you were with me. If you by mistake select the transcript variant 2, so 2 is not predominantly performing function in your body and may not be having the important phenotype, and you keep on doing experiment on transcript variant 2, you will get no results. So if you have problem in the experimental design, selection of the gene, selection of the transcript variant, so then there will be a problem. So knowledge behind the experimental design is very, very, very important. The most important thing in the life sciences is experimental design. So if you have clicked get primers, so this kind of page is open, right? Okay, good job. So whatever sequence you gave, they search from the database. In this case, they found 2 sources of these sequences you provided to design the primers. One is XM number, this one, and one is the NM number. And you can see this is the same NM number that you started from. कहाँ से आपने start किया था? अच्छा, वो कहने हैं वेरिएंट को किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे? ये अपने नॉलेज की बेस पे, एक्सपेरिमेंट की डिजाइन की बेस पे सिलेक्ट करेंगे. हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारे जीन का कौन सा ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्मिंग फंक्शन. Literature will tell us. Literature will tell us. Like in my case, if I am working on the EI24, I know transcript variant 1 is performing function. It is predominantly found. It is my knowledge about the biology, about my experiment, that will help me decide which transcript variant I am needing. So you tick this box and submit, please. Submit कर दिया जी. ये प्राइमरी किस बच्चे के आ गए? किस स्टूडेंट के आ गए? टाइम, हाँ, असल में आप सबने मिलके उनका सर्वर भी पता नहीं बैठा दिया है. अब इतने सारे तो कर रहे हैं एक वक्त में उनके सर्वर पे काम. हाँ जी, 1-2 स्टूडेंट का तो आ जाना चाहिए. आगे जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाँ जी, और जी. सो they returned with usually 5 or 10 primer pairs, and usually in my experience the first primer pair is the best usually. So whenever I used to order the primer after designing the primers by using this software, I used to order the first one, and sometimes the first and the second. Okay, actually today I'm not only going to give you the bookish knowledge, but I'm sharing my own experience and examples from my own experience. The experimental design that gave me success, I'm today going to share with you those things. So these are my experience. First and second primers are the best one. So when you design and buy the first and second. So we move next. So this is the end of the endpoint PCR primer designing. The simple PCR we do. Now I want to teach you how to design the primer for quantitative PCR. Quantitative PCR. Endpoint PCR or simple PCR does not tell how much a gene is present, how many copies are present. But the qPCR tells how many copies are present, how much virus starter is present, how much genes is present, how much. So it is the quantitative PCR. So what did we do until now? We use the NCBI database, we obtain the sequence from NCBI, and then we design the primer by using NCBI primer BLAST. But here in the qPCR, I want to teach you another genome browser, the ensemble, and we will design the primer by the primer quest. In my experience throughout my life, only 2 genome browsers were enough for me. I do not need any third one. One NCBI for the retrieval of sequence of genes, and one the ensemble. Only 2 databases are enough in my experience. I always obtained success by using these 2. So one I already taught you, the NCBI. Now in this section we will check another one, the ensemble. Please another tab, Google, and write ensemble genome browser, and click the first one. जो नए स्टूडेंट आए हैं किसको समझ लगे हमें बताइए, हम खुद आके चल जाएंगे. हाँ जी, ये पेज किसका ओपन हुआ है? इस पे क्लिक किया आपने? ये क्लिक करने से ये पेज किसका ओपन हुआ है? वेरी गुड जॉब, नाइस, वेरी गुड जॉब. अच्छा, इधर से ना ह्यूमन सेट कर लें, इधर EI24 वही लिख दें. ये अनदर जीनोम ब्राउजर है. एनसीबीआई जो है ना वो बहुत सारी एप्लीकेशन वहां पे हैं, साथ साथ वो डीएनए का सीक्वेंस भी देता है, लेकिन ये एक जीनोम ब्राउजर है स्पेसिफिकली. कौन? इंसेम्बल जीनोम ब्राउजर.
ह्यूमन सेट किया और E24 हमने लिख दिया और गो पे क्लिक करना है। और सारे स्टूडेंट जो हैं, जो नए भी आए हैं, ट्रेवल भी करके अपनी एनर्जी प्लीज गैदर करके रखें। हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, भी काम काफी बाकी है, थकना नहीं है आप लोगों ने, है जरा माइंड बना ले अभी से। अच्छा जी, गो क्लिक किया किसी ने, तो ये पेज किसका ओपन हुआ है? तो ये जो पहला जो ना E24 ह्यूमन जीन, इसको प्लीज क्लिक कर दें। ये पेज किसका ओपन हो गया? गुड जॉब, वेरी गुड, ग्रेट गोइंग। अच्छा ठीक है, आप शो ट्रांसक्रिप्ट टेबल नजर आ रहा है किसी को? इस पे भी क्लिक कीजिए और सीक्वेंस पे भी क्लिक कीजिए प्लीज। शो ट्रांसक्रिप्ट टेबल, सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे। इस तरह का ट्रांसक्रिप्ट टेबल किसी को नजर आया? ठीक है, और ये सीडीएनए नजर आ रहा है इधर किसी को लिखा हुआ? अगर नहीं नजर आ रहा ना, तो आप इस ट्रांसक्रिप्ट पे यहां पे क्लिक कर दें, यहां पे क्लिक कीजिए प्लीज। तो लेफ्ट पे सीडीएनए लिखा नजर आ रहा है किसी को? जी इधर आ गया जी, शुक्र, गुड जॉब, ग्रेट जॉब, गुड जॉब, शाबाश, गुड जॉब। सीडीएनए, तो सीडीएनए पे भी क्लिक कर दीजिए प्लीज। गुड जॉब, शाबाश। साथ वाले से भी हेल्प ले सकते हैं आप, हमारे स्टूडेंट से भी हेल्प ले सकते हैं और मुझे भी बुला सकते हैं, मैं भी आ जाऊंगा। सीडीएनए पे क्लिक करने से कलरफुल सा किसका आया है दिखाएं? कलरफुल सा, गुड जॉब। ये कलरफुल सा नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने से, गुड जॉब, शाबाश। स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, ट्रेनिंग पे आए हैं माशाल्लाह, जल्दी जल्दी करी जा रहे हैं। यहां तक अगर जब जाएंगे फिर हम आगे चलेंगे। अब सबका आ गया? अच्छा, वो कॉन्फ़िगर दिस पेज लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें जी प्लीज। कॉन्फ़िगर दिस पेज, कॉन्फ़िगर दिस पेज करने से ये ओपन हो गया। ये किसका ओपन हुआ? एक नई विंडो सामने आ गई है छोटी सी। गुड जॉब। इसमें से सिर्फ पहले को रहने दें, बाकी सबको अनटिक कर दें प्लीज। पहले को रहने दें, बाकी सारा अनटिक कर दें जी। हो गया? अच्छा, वाह, पहला टिक रहने दें, बाकी सारे अनटिक कर दें। अच्छा, मैं एक चीज छोटी सी बताना भूल गया हूं, ये जो पिछले पेज पे ना ये एनएम नंबर जो है ना, ये भी चाहिए होगा हमें, लेकिन बड़ी जरूरत मेरे पास लिखा हुआ है, मैं वो याद करा दूंगा, ठीक है? तो हम अभी कहां पे हैं? हम यहां पे हैं, पहला टिक, बाकी सारे अनटिक। इधर गुड का निशान है, इसको टिक दबा दें, गुड का निशान इस तरह लगा हुआ है, दबा दिया आपने, वेरी गुड जॉब। इस तरह का ब्लैक एंड ब्लू वाला सीक्वेंस किसका आ चुका है? वाह, ग्रेट। इधर से जी, वेरी गुड जॉब, गुड। अच्छा, ये ब्लैक और ब्लू चीज क्या है? ये कौन है? देखो, बेसिकली हमने E24 एनसीबीआई से सीक्वेंस निकाला था, वो भी एटीजी से स्टार्ट हो रहा था, ये भी E24 का निकाला है, लेकिन ये इंसेंबल जीनोम ब्राउजर से निकाला सीक्वेंस, जीन वही है। तो चूंकि ये कोडिंग सीक्वेंस है, ये एटीजी से स्टार्ट हो रहा है, देखें तो जरा प्लीज, क्या ये टीजीए पे खत्म हो रहा है स्टॉप डाउन पे? लेकिन ये ब्लू और ब्लैक क्या है? तो जो वेबसाइट है, जो लिटरेचर है, वो कहता है दे आर अल्टरनेटिव एक्सॉन्स, द ब्लू एंड ब्लैक आर अल्टरनेटिव एक्सॉन। पहला देखिए ब्लू है, एक्सॉन 1 है, अगला ब्लैक एक्सॉन 2 है, फिर ब्लू एक्सॉन 3 है। कोई बच्चा एक्सॉन गिन के बताएगा मुझे? कल एक स्टूडेंट ने सही गिन के बताए थे मुझे, एक्सॉन गिन के बताएं कितने हैं। द ब्लैक आर आल्सो एक्सॉन, ब्लू आर आल्सो एक्सॉन्स, बट दे आर अल्टरनेटिव एक्सॉन्स। कौन गिन के बताएगा? या मैं आपके साथ गिनूं मिलके? मैं गिनता हूं आपके साथ। 10 जी, गुड जॉब, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सॉन है इसके। तो एनसीबीआई में जो आपके पास डीएनए का सीक्वेंस आता है, उसके और कैरेक्टरिस्टिक है थोड़े से। यहां पे उसने हर एक्सॉन का अलग अलग उसने कोडिंग सीक्वेंस बता दिया, उस एक्सॉन के अगेंस्ट इतने न्यूक्लियोटाइड है बेसिस है, इस एक्सॉन के अगेंस्ट इसके, इसका अलग से हमें यूज करना होगा। हम देखते हैं इसका क्या यूज है, अभी हम चलते हैं। तो हमने यहां पे E24 का सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस निकाल लिया इंसेंबल जीनोम ब्राउजर से। अब हमने qPCR पैरामीटर डिजाइन करने हैं, आपके साथ मिलके, आपने मेरे साथ मिलके। तो हम, ये निकला है सबका जी। अच्छा, आप दोबारा एक नई टैब खोल लें, गूगल के अंदर लिख लें प्राइमर क्विस्ट आईडीटी लिख लें प्लीज।
एक नई टैब गूगल में खोले, प्राइमर क्विस्ट आईडीटी। ये छोटे छोटे टूल हैं, ये जिंदगी आसान बना देते हैं। मैं इन्हीं को यूज करता हूं। ऑनलाइन टूल है, फ्री में हो जाते हैं, फटाफट हो जाते हैं। प्राइमर क्विस्ट आईडीटी लिखा आपने, और जी ये पहला लिंक क्लिक कर दें जी। अच्छा जी, ये किस किस ने लिंक पे क्लिक किया है? ये बाद का अपना साइन अप मांगता है। अब साइन अप प्लीज कर लीजिए, जल्दी से हो जाता है। साइन अप कीजिए प्लीज। साइन अप मीन रजिस्टर, नया अकाउंट रजिस्टर कीजिए अपना अपना, और साथ साथ चाय पी लेते हैं रजिस्टर करने के दौरान। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट कैन हेयर मी? कैन हेयर मी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? कुछ बच्चों ने रजिस्टर कर लिया। हम एक स्टेप स्लो स्लो कर सकते हैं। जब बच्चे रजिस्टर कर लेंगे ना, तो किसी का इस तरह का पेज ओपन होगा, या किसी का डायरेक्ट ये वाला होगा। इन दोनों में से कोई पेज ओपन हुआ तो बताइए प्लीज। तो इस पेज पे आप टूल्स पे अगर हॉवर करेंगे ना अपना कर्सर, तो ये वाला ड्रॉप डाउन होगा ओपन, फिर ये वाला होगा। आपने इसको क्लिक करना, प्राइमर क्विस्ट को। कुछ लोगों का नया वर्जन खुलेगा, वो इस तरह की लुक देगा, नया वर्जन। टूल्स के थ्रू, ओलिगो डिजाइन के थ्रू, प्राइमर क्विस्ट। अच्छा जी, प्राइमर क्विस्ट पे किसी ने अगर क्लिक किया है, तो ये वाले पेज पे हम जाना चाह रहे हैं। इस तरह का पेज किसी का आया हो, गुड जॉब। नहीं, वो दूसरा इसलिए नहीं मैं करवा रहा हूं, उसकी वजह है कि जब एनसीबीआई से खुद वो डाटा रिट्रीव करता है, साथ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक भी रिट्रीव करता है, उसको एक्सॉन की सीक्वेंस का भी पता चल जाता है, वो डिफरेंट एक्सॉन पे डिजाइन करता है। अगर हम खुद पुट करेंगे, पता नहीं वो रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता। तो जब डाउनलोड किया जाता है डाटा सर, वो ना साथ एट्रीब्यूट्स भी डाउनलोड होते हैं। अगर सिर्फ कॉपी किया जाए अक्सर, तो फिर एट्रीब्यूट्स नहीं, कंट्रोल सी किया जाए फिर एट्रीब्यूट कॉपी नहीं होते आमतौर पर। तो मैं इस बारे में वरीड होता हूं हमेशा। मैं डाउनलोड करता हूं विद प्रॉपर्टीज, विद एनोटेशन डाउनलोड हो पूरा, जब डेटाबेसिस। अच्छा जी, अगर आपका ये पेज किसी का ओपन हुआ है, नहीं हुआ तो हम रुक जाएंगे। तो हमने ये वाले पे क्लिक करना है, ये वाले पे, दरमियान वाले पे। पीछे क्यों नहीं? पीछे हमारे लिए पीछे जाना कोई मुश्किल नहीं है। हम यहां से शुरू हो जाएंगे, और तो नहीं पीछे जाना। गूगल की नई टैब खोली हमने, प्राइमर क्विस्ट आईडीटी लिखा हमने, पहला लिंक क्लिक कर दिया। यहां पे साइन अप हमने किया, साइन अप करके साइन इन भी कर लिया हमने। साइन अप या मीन रजिस्टर। कुछ लोगों की नया वर्जन इस तरह खुलता है, टूल्स पे हॉवर करेंगे कर्सर को, ओलिगो डिजाइन हैंडलिंग से प्राइमर क्विस्ट में आ जाएंगे। इससे ये खुलेगी, इससे यहां पे क्लिक कर देंगे। प्राइमर क्विस्ट पे क्लिक किया आपने, तो ये पेज आ गया। अब यहां हम रुक जाते हैं। अगर तो कुछ स्टूडेंट ने क्लिक किया है ग्रेटली, तो ये पेज किसका ओपन हुआ है? इस तरह का, गुड जॉब, शाबाश। इस तरह का पेज आगे से। पीछे वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो भी आगे वाले भी, सारे बच्चे तेजी से कर रहे हैं। इधर से किया किसी ने? अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि यहां जो खाली खाना है ना आपका, वहां पे आप लिखते हैं NM_004879। यहां पे लिख रहे हैं खाने में, मैं ये चाहता हूं। और गेट सीक्वेंस पे क्लिक कर दें। इस तरह का आ गया जी, गुड जॉब, ग्रेट। तो यहां पे 3 ऑप्शन हैं जी स्टूडेंट्स। यहां पे वो कहता है कि ये जो सीक्वेंस आपने रिट्रीव किया है एनसीबीआई से, क्या आप इसे प्राइमर डिजाइन करना चाहते हैं, सिंपल प्राइमर, सिंपल पीसीआर के लिए, या फिर qPCR के 2 प्राइमर विद प्रोब करना चाहते हैं, या फिर आप 2 qPCR प्राइमर विद इंटरकालेटिंग डाई वाला करना चाहते हैं। qPCR आमतौर पे 2 तरह का होता है, एक साइबर ग्रीन से इंटरकालेटिंग डाई वाला होता है, जो थर्ड ऑप्शन मौजूद है ये वाला। जितने भी सेल नेचर साइंस के रिसर्च आर्टिकल दुनिया में पब्लिश होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें साइबर ग्रीन थर्ड ऑप्शन इंटरकालेटिंग डाई वाला यूज होता है। ये है किसका आइडिया? हाँ, एनसीबीआई आईडी। एनसीबीआई आईडी ये देखिए लिखी हुई, एनसीबीआई आईडी है NM_004879। तो एनएम नंबर बड़ा काम का नंबर होता है। वो कोडिंग सीक्वेंस आपको देता है, बार बार वो आइडेंटिटी देता है, गलत आप सीक्वेंस नहीं डाउनलोड करते। एनएम नंबर को देख लेना, अपना याद रखना जिस जीन पे भी काम कर रहे हो आप। अच्छा जी,
अब बात यह है कि जितने भी दुनिया में सेल नेचर साइंस के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, रिसर्च आर्टिकल लेटेस्ट, उनमें आमतौर पे 2 प्राइमर विद साइबर ग्रीन इंटरकालेटिंग डाई होती है यूज। साइबर ग्रीन इंटरकालेटिंग डाई है, सिर्फ उसमें 2 प्राइमर यूज होते हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। मैंने ये बनाने की कोशिश की आपके लिए, लेकिन जो दरमियान वाला ऑप्शन है वो भी बताना चाहूंगा। वो क्या है? दरमियान वाला ऑप्शन है 2 प्राइमर विद प्रोब। बेसिकली जो प्रोब होती है वो 2 प्राइमर के दरमियान डिजाइन की जाती है। जब तक प्रोब भी अपनी स्पेसिफिक जगह पे नहीं लगती जिस चीज को एम्पलीफाई करना है, दोनों प्राइमर भी स्पेसिफिक जगह पे नहीं लगते, आपको 3 लेवल ऑथेंटिकेशन मिलती है कि आपका स्पेसिफिक जीन ही एम्पलीफाई हुआ है। आमतौर पे प्रोब वाली ऑथेंटिकेशन qPCR के अंदर डायग्नोस्टिक में यूज होती है। आम रिसर्च में हम प्रोब वाली नहीं यूज करते qPCR के लिए स्ट्रेटजी। आमतौर पे हम इंटरकालेटिंग डाई वाली यूज करते, सिर्फ 2 प्राइमर्स वाली, प्रोब वाली नहीं करते। प्रोब एक 3rd लेवल ऑथेंटिकेशन देता है कि आपका मुतलका जीन ही एम्पलीफाई हुआ, क्योंकि प्रोब भी उसी 2 प्राइमर्स के दरमियान एम्पलीफाई की होती है। ठीक है जी? तो आप ये थर्ड ऑप्शन क्लिक कर दीजिए प्लीज, फिर देखिए प्रोसेस क्या हुआ है। ये पेज किसका आया है? ये पेज आया है तो व्यू एचे डिटेल पे क्लिक कर दें जी। ये जी, ये भी क्लिक हो गया, वेरी नाइस जॉब। और ये कुछ इस तरह का पेज है जी, 2 कलर के प्राइमर नजर आ रहे, एक ग्रीन एक रेड है। बच्चों का कुछ आया है? गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, वेरी क्विक स्टूडेंट्स आर, माशाल्लाह। तो देखें जी, वो कहता है जी कि ये फॉरवर्ड प्राइमर है, ये रिवर्स प्राइमर है। qPCR के उसने प्राइमर डिजाइन किए हैं उसने। वो कहता है जी जो फॉरवर्ड प्राइमर है ना, वो चूंकि 1023 बेस पेयर लॉन्ग था, ये 1023 बेस पेयर लॉन्ग है ये कोडिंग सीक्वेंस जो हमने दिया है ये 24 का। जो फॉरवर्ड है 319 से लेकर 342 बेस पेयर पे डिजाइन हुआ इस कोडिंग सीक्वेंस पे। इस फॉरवर्ड प्राइमर की लेंथ 23 मर की है, उसका TM 62 है, GC कंटेंट 47 है, और इसी तरह जो रिवर्स प्राइमर है वो यहां डिजाइन हुआ, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैंने बताया था कि आपको शायद मैं बताना भूल ना गया हूं कि qPCR प्राइमर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर आर ऑलवेज डिजाइन्ड ऑन डिफरेंट एक्सॉन्स। दे आर ऑलवेज डिजाइन्ड ऑन डिफरेंट एक्सॉन्स। द qPCR प्राइमर्स आर ऑलवेज डिजाइन्ड ऑन डिफरेंट एक्सॉन्स। क्योंकि आप यूकैरियोट हैं, आपके जो जीन है इसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं। जो एक्सॉनिक रीजन होता है ये ही सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस बनाता है। जो एक्सॉनिक रीजन है यही सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस बनाता है। और अगर आपका कोई भी जीन में लिख देता हूं, आप ह्यूमन है, एक एक्सॉन है ये, अगला एक्सॉन है ये, अगला एक्सॉन है, फॉरवर्ड अगर इस एक्सॉन पे डिजाइन हुआ तो रिवर्स उससे डिफरेंट एक्सॉन पे डिजाइन होगा। हम ये देखते हैं ये सॉफ्टवेयर ने हमारे साथ क्या सलूक किया, क्या इसने ये शर्त मानी कि नहीं मानी, इसको पता है कि नहीं पता। हम इसको थोड़ा सा कॉपी सीक्वेंस को कर लेते हैं, इसके आप आधा सीक्वेंस कॉपी कर लीजिए या पूरा ही कर लें फॉरवर्ड प्राइमर का। और जब फॉरवर्ड प्राइमर सीक्वेंस कॉपी करके हमने इधर कंट्रोल F करके सर्च किया तो ये एक्सॉन 2 पे डिजाइन हुआ है फॉरवर्ड प्राइमर। चेक कर लें, आपके पास सीक्वेंस UI24 का भी है, कुछ देर पहले हमने निकाला था, डिफरेंट कलर वाला ये सीक्वेंस वही है। तो इसने फॉरवर्ड प्राइमर एक्सॉन 2 पे डिजाइन किया है। और जो रिवर्स प्राइमर को मैंने फाइंड किया वो 3 और 4 के जंक्शन पे डिजाइन किया गया है। अब आप ये पूछेंगे, अगर पूछना चाहते हैं कि qPCR प्राइमर क्यों डिफरेंट एक्सॉन पे डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि RNA एक्सट्रैक्शन के दौरान कुछ ना कुछ DNA की इंप्यूरिटीज आने का खदशा होता है। तो DNA फॉल्स पॉजिटिवली एम्पलीफाई होके फॉल्स पॉजिटिवली आपके नंबर ऑफ कॉपीज को ज्यादा ना शो कर दे, इसलिए हम डिफरेंट एक्सॉन पे प्राइमर डिजाइन करते हैं। क्योंकि हर एक्सॉन के दरमियान, अगर ये एक्सॉन है, ये मैं एक्सॉन बनाने लगा हूं जी, E1 है, आप ये 24 जीनी की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये इंट्रॉनिक रीजन है दैट आर नॉट इंक्लूडेड टू मेक द प्रोटीन, इंट्रॉनिक रीजन। फिर अगला एक्सॉन में बना देता हूं E2 E3। ये डीएनए का सीक्वेंस यूं होता है, एक्सॉन इंट्रॉन जीन का सीक्वेंस। अगर हम डिफरेंट एक्सॉन पे डिजाइन करेंगे तो इतना बड़ा फ्रेगमेंट एम्पलीफाई नहीं होगा, डीएनए की इंप्योरिटीज आ भी जाएं। जबकि कोडिंग सीक्वेंस में क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस में यही एक्सॉन ज्वाइंट हो जाते हैं। मैं यही इसके ऊपर ही बना देता हूं, E1 इंट्रॉनिक रीजन स्प्लाइस आउट कर दिए जाते हैं कोडिंग सीक्वेंस के अंदर, E2 E3
तो ये किस में होगा? ये कोडिंग सीक्वेंस में होगा। तो जब ये इतना बड़ा फ्रेगमेंट हो सकता है ये 1 kb का हो, 1 kb का मतलब है 1000 बेस पेयर का, तो डीएनए की इंप्योरिटी आ भी जाए तो हो सकता है 1000 या 2000 बेस पेयर का इंट्रॉनिक रीजन एम्पलीफाई नहीं होगा और फॉल्स पॉजिटिवली आपको एम्पलीफिकेशन रिजल्ट नहीं देगा। जबकि सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए जिसमें इंट्रॉन नहीं होते सिर्फ वही एम्पलीफाई होगा। अगर आपने qPCR प्राइमर डिफरेंट एक्सॉन पे डिजाइन किए होंगे तो qPCR प्राइमर्स आर डिजाइंड ऑन डिफरेंट एक्सॉन्स। तो हमारे केस में उसने क्या किया, हम देख लेते हैं, ये बहुत डर्टी हो रहा है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं हम। हमारे केस में उसने क्या किया, हमारे केस में उसने जो फॉरवर्ड प्राइमर था हम देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे वो एक्सॉन 2 पे डिजाइन किया, ठीक है, एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 पे, और जो रिवर्स प्राइमर है वो 3 और 4 के जंक्शन पे किया है। This is even better condition. This is even better condition if you design a primer on the junction of 2 exons. दोनों एक्सॉन कब इकट्ठे होंगे? क्योंकि जंक्शन पे डिजाइन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए में होंगे, क्योंकि एमआरएनए में इंट्रॉनिक रीजन सप्लाइस आउट हो जाता है। आप वरी नहीं करें, ये थोड़ा सा बायोलॉजी का है कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें थोड़ा सा जानने की जरूरत है, तो आप वरी नहीं करें। हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तो लेकिन कर ही रहे ना, गो थ्रू हो रहे हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है, साथ में थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, स्नैपडील सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है क्या आपने? अगर कर लिया मैं इसकी प्रैक्टिस करके गुजरना चाहता हूं, अगर नहीं किया फिर इसको बाद में कर लेंगे, लंच के दौरान इंस्टॉल कर लेंगे। उम्र बताइएगा यार, इन बच्चों को भी देख लो यार, ये भी अच्छे बच्चे हैं। नहीं किया? आपको जो मैंने स्टडी मटेरियल का, वर्कशॉप मटेरियल का दिया था लिंक, उसमें सॉफ्टवेयर मौजूद है, उस पर डबल क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। लंच की बात कर लें फिर, चलो ठीक है, हम ये सेशन बाद में कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये बात ये कि सिर्फ प्राइमर डिजाइन कर लेना या किसी पब्लिश पेपर से लेके उनसे qPCR लगाना, इट्स नॉट ए सुटेबल स्ट्रेटेजी, इट्स नॉट द सुटेबल स्ट्रेटेजी। तो प्राइमर को हमने एट्रीब्यूट्स को चेक करना होता है, टेस्टिंग ऑफ द प्राइमर्स। हम दो तरीके से प्राइमर को टेस्ट करना चाहते हैं, इवन दो वी ऑब्टेन द सीक्वेंस ऑफ प्राइमर्स टू एम्पलीफाई your desired gene. For your desired gene, somewhere else in the published paper, the sequence of primers have been given, and you must test those sequences before you buy those primers, whether they are really fine or not. Maybe in those research articles, the primer sequence, the primers are not very fine. Maybe in those research articles. So, first testing is about the primer complementarity. So the first testing is about the primer complementarity. So we are going to use this sequence, this table have been given in the word file that is already provided to you. आपको word file provide की गई है वर्कशॉप मटेरियल के नाम से फोल्डर के अंदर। तो उसमें ये सीक्वेंस दिया गया, नहीं भी दिया गया तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहें, मैं आपको सीक्वेंस लिखवा दूंगा। तो आप गूगल में जाइए और एनसीबीआई प्राइमर ब्लास्ट लिखिए। हमने पिछले सेशन में, पिछले सब सेशन में एनसीबीआई प्राइमर ब्लास्ट से प्राइमर डिजाइन किए थे। ये प्राइमर टेस्टिंग के लिए भी यूज हो सकता है। क्या नाम है? एनसीबीआई प्राइमर ब्लास्ट। बेसिकली ये प्राइमर डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, एनसीबीआई का टूल है ये, लेकिन प्राइमर टेस्टिंग के लिए भी किसी हद तक यूज हो सकता है। वेदर द प्राइमर्स यू हैव obtained the sequence from some published papers, whether the primer are really amplifying the gene of your interest or not. We want to check the complementarity of those primers for your gene. This is the complementarity test. अच्छा जी, ये पहला लिंक ही क्लिक कर लें जी। We did this and we click this, and this page is open now. So simply type the forward primer here and reverse primer here. I call for you. जो बोलूंगा आमतौर पे जो डीएनए के बेसिस है वो 3-3 करके बोले जाते हैं, फिर मिस्टेक नहीं होती। 3-3 करके बोलता हूं मैं आपके लिए, 3-3 करके आप मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है? लिखिए जी, जीसीजी। ये पेज ओपन हुआ बच्चों का? अच्छा, मैं दोबारा से शुरू करता हूं, आप मेरे साथ रहिएगा। ये जो दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के हैं ना, ब्लैंक्स बनी हुई, तो मैं सीक्वेंस पहले फॉरवर्ड का बोलूंगा फिर रिवर्स का बोलूंगा। अगर आपके पास वर्ड फाइल है उससे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, वरना मैं लिखवा देता हूं आपको। तो लेकिन मेरे साथ रहिएगा फिर ना, मैं दोबारा से शुरू करने लगा हूं। अब नजर आ रहा है बच्चों को? लेकिन 3-3 करके लिखिएगा तो गलती नहीं होगी। वो कुछ नहीं छेड़ना किसी और चीज को, आपने सिर्फ ये सीक्वेंस पुट करना है और किसी चीज को यहां पे छेड़ना नहीं है, सिर्फ यहां पे मस्कुलस कर लें, क्योंकि ये प्राइमर जो दिए हुए हैं ये माउस के हैं,
इस तरह आपको होमोसेपियन कहते हैं, माउस को मस मस्कुलस कहते हैं। मैं सिर्फ माउस और ह्यूमन दो पे सिर्फ काम चीजों पे करता हूं। तो यहां मस मस्कुलस कर लें, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू से इधर से मस मस्कुलस, और यहां पे क्लिक कर दें। फिर स्लाइड पीछे, ये ठीक है, मस मस्कुलस सेलेक्ट किया, गेट प्राइमर पे सिलेक्ट क्लिक किया, तो ये पेज आ गया हमारे पास। अच्छा अब देखें, अब प्राइमर जो दिए थे हमने, सिर्फ प्राइमर दिया, हमने कोई सीक्वेंस नहीं दिया। उसने बताया हमें इस सॉफ्टवेयर ने कि ये प्राइमर जो है ना मस्कुलस पर टीलोमरेज ट्रांसक्रिप्टेज स्टर्ट पे बाइंड कर रहा है। अच्छा वरी नहीं करें, मुझसे सीख लें, करना ऐसे ही है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो इसमें जी, और ये ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 1 पे बाइंड कर रहा है और उसके एमआरएनए पे बाइंड कर रहा है। ये आपको कोई भी प्राइमर का सीक्वेंस दें तो ये बता देता है कि जीनोम में किस जीन को बाइंड करके एम्पलीफाई करेगा। तो ये कंप्लीमेंटेरिटी का एक टेस्ट है। इस तरीके से प्राइमर को चेक करना। एक टेस्ट और कर लेते हैं हम मिलके, आप मेरे साथ रहें। एक टेस्ट हमने कर लिया, अगला टेस्ट कर लेते, इसमें परेशानी कोई बात नहीं है, बच्चों को तरीका पता चल गया ना, तो हम अगला टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही होना ये ठीक है। पीपीटी और वीडियो लेक्चर दोनों चीजें मिलेंगी आपको। बस यहां पे जाके ये जीन का नाम बता देगा, विच जीन दिस प्राइमर्स आर बाइंडिंग टू। This is the only purpose. Which gene the primer you have given to the NCBI primer blast, which gene these primers are binding to. So this purpose when it's achieved, अब इससे ज्यादा अगला पर्पस क्या है, अगला पर्पस मैं बता देता हूं। अब जीन आपके प्राइमर जो हैं, ये आपके जीन के साथ तो कंप्लीमेंटेरिटी है, कंप्लीट कर रहे हैं। क्या इनकी बाइंडिंग एफिशिएंसी एनफ है? क्या ये हेयरपिन तो नहीं बना रहे? क्या ये सेल्फ डायमर तो नहीं बना रहे? क्या ये म्यूचुअल डायमर तो नहीं बना रहे? ये प्रॉपर्टी चेक करना भी जरूरी है, सिर्फ कंप्लीमेंटेरिटी हो जाना प्राइमर की जरूरी नहीं है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम एक ही टच में आपके साथ मिलकर चेक करना चाहते हैं। कंप्लीमेंटेरिटी के बाद आप कंप्लीमेंटेरिटी एक और तरीके से भी चेक कर सकते हो। आप जीन का सीक्वेंस निकालो और उस पर कंट्रोल एफ करके अपने प्राइमर पेस्ट कर दो। कंट्रोल एफ करके भी कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हो। आप अपने प्राइमर्स को जीन के सीक्वेंस निकाल के कंट्रोल एफ करके जीन का सीक्वेंस दे दो, तो वो सीक्वेंस सेम को सर्च कर देगा आपके। इस तरीके से भी आप अपने जीन का सीक्वेंस चेक कर सकते हो, वेदर दे आर बाइंडिंग टू योर जीन आर नॉट, बाय जस्ट यूजिंग द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेकिन बाकी जो पैरामीटर है, ये हेयर पिन बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये पैरामीटर हम चेक करना चाहते हैं। आप मेरे साथ रहें। टेस्टिंग ऑफ प्राइमर्स फॉर द बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स कैसे है जी? आप जी ओलिगो एनालाइजर आईडीटी दोबारा लिखें। आपने लिखा था लास्ट टाइम प्राइमर क्विस्ट आईडीटी, इस बार लिखने जा रहे हैं ओलिगो एनालाइजर आईडीटी, और पहले लिंक पे क्लिक कर दें। ओलिगो एनालाइजर आईडीटी, पहले लिंक पे क्लिक कर दें प्लीज। हाँ जी, हो गया क्लिक। तो ये वाला पेज किसी का ओपन हुआ है क्योंकि आप ऑलरेडी साइन अप और साइन इन हैं। तो क्या इस पेज पे कोई आया है क्या? गुड जॉब, वन स्टूडेंट रीच्ड ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ येलो काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप यहां पे आ गए हैं तो स्टार्ट ओलिगो एनालाइजर पे क्लिक कर दें। स्टार्ट ओलिगो एनालाइजर, हमने अपने ओलिगो प्राइमर्स को कहते हैं, ओलिगो प्राइमर्स को कहते हैं, उसको हमने एनालाइज करना चाहते हैं। आ गया स्टूडेंट्स? ये देखिएगा ना, जो विंडो आपकी ओपन है ना, साइंड इन है, उसमें टूल्स, हैंडलिंग, ये ओलिगो एनालाइजर पड़ा हुआ। देखिए ना, ये देखिए, इसके थ्रू कर लिया आपने। क्या आप इस पेज पे स्टार्ट के बाद इस पेज पे आ गए हैं क्या? यहां पे एक प्राइमर कंट्रोल भी कर दें, जो कि पीछे से कोई भी आपने डिजाइन किया है, कोई भी एक प्राइमर कंट्रोल भी कर दें, पेस्ट कर दें। फॉरवर्ड प्राइमर कर दें, जो अपने qPCR के प्राइमर डिजाइन किए थे उनमें से एक फॉरवर्ड कर दें। qPCR के प्राइमर डिजाइन किए थे ना, एक ग्रीन था, एक रेड था प्राइमर। देखिए ये सारे सीक्वेंसेस आपकी वर्ड फाइल में मौजूद हैं, जो आपको मैंने दे दी हुई है। अगर वो वर्ड फाइल आप मटेरियल डाउनलोड कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं आप। अभी भी टाइम है, वो फाइल डाउनलोड कर लें, लिंक आपके पास है जी। नजर आ रहा है जी? कर लेंगे टाइप। असल में थकन भी तो माउंट कर रही ना, अब बच्चे थक भी तो रहे हैं। अभी आधा काम नहीं हुआ, अभी काफी काम बाकी। जी फरमाइए। गुड जॉब, नाइस। अगर आपने ये सीक्वेंस पुट कर लिया है तो वो एनालाइज जो ऑरेंज कलर का है उस पर क्लिक कीजिए प्लीज। वो ऑरेंज कलर का जो एनालाइज लिखा हुआ है, एनालाइज पे क्लिक करने से ये वाले पैरामीटर सारे सामने आ जाएंगे। ये सारे पैरामीटर सामने आ जाएंगे। किसी के आए हैं पैरामीटर के सामने? गुड जॉब, शाबाश, ओके गुड।
अभी हमने थकना नहीं है, काम बाकी है बहुत सारा। आप सारे बहुत ब्रेव पीपल हैं, इतनी सारी चीजें एक वक्त में सीख रहे हैं। यू आर अमंग ब्रेव पीपल। इतना सारा सीखना एक वक्त में मुश्किल होता है। यू आर स्पेशल वंस। आप बहादुर लोग हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग दूंगा ना आपको मैं, पीपीटी ऑलरेडी दे चुका हूं आपको मैं खुद भी मौजूद हूं। मैं अपने बच्चों को एक्सीलेंस देखना चाहता हूं, एक्सीलेंट, टॉप इन द वर्ल्ड, इसलिए मैं इतनी कावज कर रहा हूं। एक बार गो थ्रू होंगे, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस होगा। एक बार गो थ्रू होने से कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस जरूर होता है। हमने देखना यह है कि प्राइमर इज कंप्लीमेंटेरिटी टू द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यू वांट टू एम्प्लीफाई, इट्स फाइन, बट द कंप्लीमेंटेरिटी हो जाना काफी नहीं है। दिस इज नॉट मेकिंग द डायमर, दिस इज नॉट मेकिंग द हेयर पिन, दिस इज एफिशिएंटली बाइंडिंग और नॉट, दिस इज containing enough GC content. There are so many attributes a primer must have, and our brain cannot process all those informations for the attributes of a primer. Our brain cannot. That's why we are making use of the softwares. Software does process all these information. The requirement of primers, all the requirements of primers, the software is analyzing for us. So that's why we are making use of the software, not only for the primer designing, but also for the primer testing. First of all, for the checking of attributes of a primer, we're going to use the oligo analyzer from the IDT website. So we can directly, or in the already opened window, we can click tools, then the oligo design and handling, and then we can click here on the oligo analyzer. These are interlinked windows that will be opened through the tools and this one and this way. After clicking this window, we come across this kind of window. This is the oligo analyzer window. We will put the sequence of one primer here. We can put sequence of any of the primer just for the sake of practice we want to do. We want to practice. We will put the sequence one primer here and we will click analyze. So the basic properties of the primer, then it will analyze for us the TM, the GC content and something, sequence it is giving, its length it is giving, some basic properties it is giving. Then we click the next hairpin. We click analyze, we obtain these things, then we click the hairpin, please click hairpin, and this kind of informations are there. This is same. After clicking hairpin, this kind of window is open. किसी की open हुई इस तरह की? Very nice job, very good job. So the software is analyzing for us whether the primer is really, it can survive in this condition or it can bend on itself to make the hairpin. If the primer is making the hairpin, is binding to itself, it will definitely bind to the DNA then it will not give the amplification. It must not bind to itself to make the hairpin this way. So for the hairpin, it is giving different levels of energy, you can see. This levels of energy. So if the energy must be greater than -6 kilocalorie per mole if it is to be safe and if it is not to make the hairpin. तो ये -6 से काफी ज्यादा है जो हमारे प्राइमर की आई है. So our primer is safe, it will not make the hairpin. देखिए प्राइमर जो है ना, एक ये फॉरवर्ड प्राइमर मैंने बना दिया, देखें एक रिवर्स बना दिया ये वाला प्राइमर. तो मैं ये एक फॉरवर्ड ले लेते, देखें जो भरी हुई बोतल है ये फॉरवर्ड प्राइमर है. ये देखिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूं. ये भरी हुई बोतल फॉरवर्ड प्राइमर है, ये खाली रिवर्स है. इस तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देना है पीसीआर का. तो क्या होना चाहिए, अगर ये जो रिवर्स प्राइमर है इसके यहां पे भी ATGC इस तरह सीक्वेंस है, अगर ये इस तरह बेंट होके खुद के साथ ही हेयर पिन बना देता है, जैसे ये हेयर पिन बनी हुई है, ये हेयर पिन, तो फिर ये खुद के साथ ही अगर बाइंड कर जाता है इस तरीके से हेयर पिन बना के, तो फिर ये आपके टेम्पलेट के साथ नहीं बाइंड करेगा. टेम्पलेट मीन डीएनए, और एम्प्लीफिकेशन नहीं देगा. तो प्राइमर, एनी ऑफ द प्राइमर वेदर द फॉरवर्ड और द रिवर्स शुड नॉट मेक द हेयर पिन. So this test is for whether it is making hairpin or not. And from the energy we can check. This energy shows that this is fairly higher than this energy. What is this? This is minus 3.5 kilojoule per mole, kilocalorie per mole. So energy must be higher than this value if it is not to make the hairpin. This is one of the attribute.
Next, please click the self dimer. We one time put the sequence and one by one we are analyzing different attributes of the primer. We can see here, this is same primer, this is same primer. For example, same primer, different copies of same primer may be binding to each other. By finding the sequence of complementarity. If the forward primer is binding to forward primer and many dimers are made, definitely the primer then will not bind to the DNA strand. So we can see clearly here, there are very less complementarity site when we check the self dimerization. Self mean forward primer copies are binding to forward primers. Reverse primer copies are binding to reverse primers. This is called the self dimer. So it is not enough making the self dimer. Next, please click heterodimer. When you click the heterodimer, a new window will be opened. One primer sequence already that we have given, that we gave is present, and the second primer, the reverse primer sequence we will then put here. If you put the sequence of reverse primer, then you can click the calculate. So this sequence I write here for you. Umar, I am calling. Please check whether I have written correctly. CTG, TCT, CCT, AAA, GGA, CTT, GTG, GACTT. So when we write the sequence of DNA, try to write and call 3 letters at a time. This avoids mistake. 3 letters at a time, please call. Okay? And then please click the calculate, and you can see how much complementarity there is between the forward and the reverse primer. One is forward and one is the reverse primer, and you can see there is not much complementarity between the two primers. It means it is safe to use them. तो हमने दो तरीके से एनालाइज किया. पहले हमने कंप्लीमेंटेरिटी को चेक किया, फिर हमने प्राइमर एट्रीब्यूट्स चेक किए. तो इतने सारे पैरामीटर चेक करने के बाद देन वी कैन बाय दोज प्राइमर्स. Those sequences may be safe. अब हम नेक्स्ट सेट चल रहे हैं ना. पीसीआर ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी मैं बताता जाना चाहता हूं, फिर मैं नेक्स्ट ना क्रिस्पर की तरफ जाना चाहता हूं. देखिए, प्राइमर जो आप डिजाइन करेंगे ना, उनको एक फॉरवर्ड होगा, एक रिवर्स होगा. तो रिवर्स प्राइमर आपको पता ही होता है, जिस भी जीन को एम्प्लीफाई करना है, तो जिस सीक्वेंस का हमें पता हो वहां पे हमने पुट करना है. एक फॉरवर्ड का सीक्वेंस, एक रिवर्स का है. हमने ये खुद डिजाइन करने होते हैं प्राइमर, फिर उनको टेस्ट करना होता है, या फिर हमने ऑलरेडी रिपोर्टेड प्राइमर को सीक्वेंस को निकाल के बाय करने से पहले सीक्वेंस को टेस्ट करना होता है. हम खुद सिंथेसाइज करवाते हैं, कोई भी सीक्वेंस देके कंपनी से हम खुद डिजाइन करते हैं, या फिर पब्लिश पेपर से हम हासिल करते हैं. क्या? द सीक्वेंस ऑफ प्राइमर्स. तो हम कुछ ट्रबल शूटिंग देकर जल्दी से नेक्स्ट सेशन की तरफ जा रहे हैं. टाइम बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा बाकी है. अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि पीसीआर रिएक्शन आपने लगाया तो कोई भी बैंड नहीं आया, मुकम्मल ब्लैंक आई, ये लैडर आ गई आपके पास, तो इन सूरतों में जो इस तरफ राइट साइड पे लिखी हुई चीजें हैं, ये पीसीआर कंडीशंस हैं टेम्परेचर वगैरह की, और इस तरफ जो हैं वो चीजें हैं कौन कौन से रीजन जिनको आप डील करके इस कंडीशन को कोप कर सकते हैं. हाउ टू कोप दिस कंडीशन. कंप्लीटली ब्लैंक जेल, मे बी समटाइम द annealing is too high, please decrease the annealing. This may be one of the strategies to cope this kind of no amplification at all condition. This condition, no amplification at all. Another one, please try ramping temperature for the primer binding. For example, the annealing temperature may be 58 degrees centigrade, and in the first cycle you give 54, next cycle 55, 56. This way you keep on increasing little by little the temperature so that the primer finds a feasible condition for binding and for the amplification. You can use the ramping condition, ramping annealing condition, if you want to cope this kind of situation, and maybe check the primer parameter, they may not be at all binding. That's a totally blank gel. And you can increase the magnesium chloride concentration, because magnesium chloride help in the binding of the primer, little bit increase the magnesium chloride concentration, or you can, maybe some newcomers may be missing, have missed adding some reagent, maybe technique polymerase has been missed when you were making the reaction. Please check whether you have added every component of the PCR or not, and then sometime increase the primer concentration. But usually in my experience of 20 or 21 years in doing this kind of PCR, usually the primer always lies in the
DNA and the primer. Primer sometimes are degraded, or DNA is not of good quality. That's why sometimes you face poor PCR amplification. So please consider these two things first, the DNA and the primer. So this kind of condition, when the long smears are there are no bands, not totally blank gel this is, but the long smears are there. So this kind of condition you can cope by considering these kind of parameters. You can see right and left some parameters are written. And there is another condition when the multiple bands you see instead of one band. For example, you are aiming for one band, but there are multiple bands. So you can cope this condition by considering these kind of parameters. One of my lecture in detail is given on the YouTube already several years back. I conducted a webinar that is talking in detail about these kind of things, because this workshop is has 4 modules. One specialized lecture on PCR is already on YouTube channel. Maybe I have already sent you the link for that lecture. So now we are moving to the next session. We are going to see what the CRISPR-Cas9 technology is. Everybody is fascinated by this technology. Everybody wants to do. We understand what it is. But I simply say it's a technology, just like the PCR is a technology. It's a technology. What to do by using this technology? It's your brain then. Your brain, your thinking, your application will decide. This is simply technology. We today try to capture, try to grasp this technology. You please be with me. So, when DNA you know already is double-stranded, you know. When the single strand cut is made, single strand cut is called the nick, N-I-C-K, nick. When single strand cut is made on the DNA that is present in your cell, in your body, cell easily repair this kind of single strand cut, nick is easily repaired. But when the double strand cut is made on the DNA, the cell comes in emergency. Cell try to repair this kind of emergency, cope this emergency by repairing double strand cut. When you can see double strand cut has been made here. When coping this double strand cut, for example, you can see at this target site there are 6 yellow bases are shown here. Yellow have been shown to show you how these bases will be deleted or added. That's why they have labeled these bases at the site of cut with the color yellow. So when the cell in emergency try to repair this double strand cut, sometime by mistake it deletes some of its bases during the repair. That is in emergency. Sometimes it adds some bases in the vicinity. Whatever is in the vicinity during the double strand cut, cell will add some extra bases, whatever will be present in the vicinity. And sometimes both things are happening, some deletion and some new addition happens. These things are happening only when there is a double strand cut. And this kind of condition of repair of a double strand cut is called the non-homologous end joining. NHEJ, non-homologous end joining. There is another condition that is considered, that is adopted in the gene therapy. What is happening? They are using an artificial cassette. That artificial cassette is containing the sequence that is the wild-type sequence, that is the sequence from the healthy individuals. And there is some mutation somewhere here, and they want to repair that mutation, they want to remove that disease. There are some diseases because of the mutation in the DNA, you already know. So they want to repair the mutation. Want to repair the mutation, for example, in animal, in the individual, it's called the gene therapy. So they will send a cassette that is containing the healthy or wild-type sequence. The artificial cassette is sent. But that artificial cassette is, for example, containing the sequence, that much sequence from this shoulder, for example, is the sequence from the healthy individual that is not causing the disease. And the right hand and the left hand homologous arm, along with this normal sequence, this cassette is made and is sent somewhere here. This sequence homologous arm are similar to that sequence where we want to make repair, and this is the right homologous arm is having the same sequence here. So when the double strand cut is made, this artificial cassette is replace the sequence of mutant gene, and the mutation is repaired. So because why this artificial cassette is replacing the mutant gene by the homologous recombination? Because you are the eukaryote and you have the recombinase enzyme, the homologous recombination then is causing
the replacement of artificial cases with the mutant sequence in the individual. So this kind of double strand cut help not only the disruption of the expression in the case of NHEJ, but also can be used to repair a mutation in an exact way with 100% accuracy. So two kind of things, double strand cut, two-way this double strand cut can be utilized. So we can make double strand cut actually by CRISPR. So CRISPR is not anything special, but it makes a double strand cut. How it will be used, it depends on you, on your application. Okay, we are moving forward. They are showing one scissor and the scissor is cutting the DNA. CRISPR is so much accurate and so much easy and inexpensive. They are resembling that just like the scissor can cut anywhere, any paper, the DNA can also be cut. That's why they have resembled, they are showing the scissor to you. It is so inexpensive, time efficient, cost efficient. It's very easy and accurate technology. That's why this picture, simple picture is shown. So in the my previous lab, so we were using the single finger and talent technology to knock out a gene, to make the genetic engineering, to do the genetic engineering. My expertise are in the molecular biology, cell biology and genetic engineering are my expertise, my research work. Molecular biology, cell biology and genetic engineering. I have made several knockout and genetically engineered mouse models for the study of human diseases during my PhD. So this data is the real data from my previous lab. So when we use the new technology that is called the Argent technology, this is the zinc finger technology, this is the talent technology, when the Argent technology that is called the CRISPR, RNA guided endonuclease technology. CRISPR-Cas9 sometimes is called the Argent, RNA guided endonucleases. So CRISPR technology when we use, we obtain the highest efficiency, you can see 90% as compared to old technologies. And even the very low toxicity is there. So this is data from our lab. When the CRISPR was first of all invented, I was back in Korea doing my PhD, and our lab was pioneer for the use of CRISPR to make the knockout mice, to do the genetic engineering in the mice. So then at that time we tested the efficiency, then we adopted this thing. So we are moving forward. CRISPR is nothing special, very special. I don't consider it too much. So this below, two things are only needed. CRISPR is requiring only two things. This blue bubble in the background is Cas9 protein. And you can see this one. You can see this one. I follow this with the red line. This is the guided RNA. This is called gRNA guided RNA. Because this is one single RNA, sometimes it is called single guided RNA, sgRNA or RNA. So don't worry from the fancy terminology, just try to grasp the concept. Fancy terminology, need not to worry about. This is the guided RNA Cas9. Only two things are required to make a double strand cut. So this Cas9 is same for all kind of applications, but this guided RNA is bit different for the double strand cut at a specific site, at a specific gene. So this guided RNA, you may say, contains two portions. One is the complementary site. These bases are complementary to the site where you want to make the double strand cut. They complement to your gene of interest where you want to make a double strand cut. This portion. And this one is called the scaffold. When scaffold and the complementary sequence are required, are joined, when the scaffold and the complementary sequence are joined, and the single guided RNA is sent along with Cas9. So wherever this single guided RNA will bind, the Cas9 will make a double strand cut at that place. Single guided RNA will bind somewhere. For example, this one is the complementarity site to this place in the genome, and this is the scaffold. They are joined together, they are sent to the cell, it searches, it finds complementarity here. When the guided RNA binds here, Cas9 goes to that place. That is actually guiding the Cas9 to come, and when Cas9 comes here and see it is bound, it make a double strand cut. That's the only thing. And it's very simple. And we will try to learn by in silico tools today. This was this theory portion.
What we need to do? We have to find, for example, in the case of Cas9 protein, we have to find the sequences NGG. N mean anything, A, T, C, G, N is any of the nucleotide, and GG you know already, nitrogenous base G is. You have to find anywhere in the genome, anywhere where you want to make the double strand cut, you have to find NGG sequence, and 20 mers of upstream of NGG sequence, you copy that DNA sequence 20 mers above the NGG. Above mean right above the NGG. You don't give any gap, but right above the NGG you copy the 20 mers. These NN and blue mean this is the sequence on your gene. But this sequence is specialized because this sequence is followed by NGG. That's the only thing you need to do. Now we start our experiment. NGG genome में बहुत जगहों पे find कर सकते हैं. 2013. So this CRISPR technology has successfully have done the genetic engineering in these much species, these much animals, not only in plants but also in animals. So I only tell you this Cas9 has two domains. One domain cuts the top strand, the other domain cuts the bottom strand, for example. So there are commercially available plasmids already. For example, this is the commercially available plasmid PX330. This is already containing the coding sequence of Cas9 protein, and the U6 promoter and the scaffold is there. You need simply only these 20 mers that you copied from the gene that you want to cut. You copied these 20 mers, you simply will clone this blue here, that is again shown here in the blue color. When you clone this 20 mer in this plasmid, in this commercially available plasmid, this plasmid whenever will sent to any cell, it will cut the gene where you copied the sequence from. ये उस जीन को काट देगा. सिर्फ इतनी सी बात है. और अच्छी न्यूज आपके लिए मैं ये बताता चलूं, कल मैंने नहीं बताई, कल मुझे याद नहीं रहा. जितने भी लाइफ साइंटिस्ट हैं, लाइफ साइंसेस के लोग हैं, अच्छी न्यूज आपके लिए ये है कि जितने भी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, किसी भी मुल्क में जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जितने भी जदीद तरीन भी एक्सपेरिमेंट हो, द प्रिंसिपल ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट इन द लाइफ साइंस, द प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल. द प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल. मैट्रिक का स्टूडेंट भी उस प्रिंसिपल को समझ सकता है किस प्रिंसिपल पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, चाहे वो अमेरिका में हो रहा है. ये एक अच्छी न्यूज है आपके लिए. Understanding the principle of any experiment anywhere that is anywhere is performed, even in advanced countries, you can easily understand the principle. Principle is very simple. मैंने doing simple नहीं कहा, doing is not simple. Principle is very simple. ये अच्छी न्यूज है. आप आसानी से किसी भी टेक्निक को समझ सकते हैं, किसी भी वैक्सीन बनाने को, किसी भी चीज करने को आप आसानी से समझ सकते हैं. एक आपके लिए अच्छी न्यूज है. तो यहां पे भी देखें, प्रिंसिपली हमने कुछ भी नहीं किया. प्लाज्मिड लिया कंपनी से, सिर्फ ये 20 मर जहां जिस जीन को काटना उसको 20 मर लेके इस जहां पे क्लोन कर दिया. जिसमें भी ये प्लाज्मिड आप भेजेंगे, जिस सेल में भी, वहां पे ये उस जीन को काट देगा. जब जीन को काटेगा, I want to practice now with you the CRISPR now. Please open the Google and write ensemble mouse 30 if you write please. अगर आपने ये पहले वाला जो जीन डाटा आ गया, इस तरह का पेज किसी का ओपन हुआ है जी, पहले लिंक पे क्लिक करते हैं. और अब मैं आपको बताता चलूं, ये CRISPR पे जो मेरा लेक्चर है फुल लेंथ YouTube पे मौजूद ऑलरेडी है. ये आप देख सकते हैं. इसमें पोर्शन मैंने आपको टीच करना है आज के दिन, लेकिन मेरा फुल लेंथ लेक्चर YouTube पे ऑलरेडी मौजूद है. ये लिंक उसका दिया गया है, ये पीपीटी स्लाइड आपको मिली है. इस पे लिंक पे खोलेंगे तो मेरा फुल लेंथ लेक्चर आप देख सकते हैं CRISPR पे. ये पेज किसका ओपन हुआ है जी? ये वाला पेज. गुड जॉब, ग्रेट. अच्छा, इस पेज में ना ये सीक्वेंस पे क्लिक कर दें जी प्लीज. ये सीक्वेंस, इधर सीक्वेंस लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करने से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, इस तरह कुछ चीज आ रही देखें नजर. ये देखें, फिर 2 कलर वाला सीक्वेंस आ गया है. पहले ब्लू ब्लैक वाला आया था जो कि कोडिंग सीक्वेंस था अल्टरनेटिव एक्सॉन्स. यहां पे ब्लैक और रेड हाईलाइटेड है. ब्लैक और रेड सीक्वेंस, 2 कलर का सीक्वेंस आ गया. फिर ये माउस के टर्ट जीन का सीक्वेंस है, माउस के टर्ट जीन का सीक्वेंस है ये. और ब्लैक इसमें जो है वो इंट्रॉन्स हैं और रेड इसमें एक्सॉन्स हैं. ये पूरे जीन का सीक्वेंस है. जैसे कुछ देर पहले हमने कोडिंग सीक्वेंस निकालने का तरीका देखा, अब पूरे जीन का सीक्वेंस निकालने का तरीका भी हमें इसी बहाने आ गया. प्रैक्टिस के दौरान पूरे जीन का सीक्वेंस निकालना हो. ब्लैक is intronic sequence and the red are the exonic sequence, and most of the time we are interested in exonic sequence because exons are protein coding sequence.
तो मैं ये चाहता हूं इस रेड रीजन को कंट्रोल सी कर लें, हम कॉपी कर लें, इस रेड रीजन को कॉपी कर लें, ये सिर्फ रेड को पहले एक्सॉन को। अच्छा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो और भी एक्सॉन नजर आएंगे। आपने पहले एक्सॉन को करना है, आपने पहले एक्सॉन को कॉपी करना है, पहले एक्सॉन रेड वाले को कॉपी करना है आपने। अगर आप अपने फ्रेंड्स को भेजना चाहें लिंक, जो घर पे बैठ के ट्रेनिंग करना चाहें उनको लिंक भेज दें। ये सारी दुनिया में ओपन है लिंक इस वक्त, जो भी मर्जी दुनिया में देख ले। हाँ जी ये कॉपी कर लिया सबने जी, आगे हम चलना चाहते हैं। अब जी गूगल पे जाके ना दोबारा गूगल की नई टैब खोल लें और वहां पे ना ये क्रिस्पिक लिख लें, क्रिस्पिक लिखें ये वर्ड, और इस तरह का लाइनों वाला आइकन देखें किसके पास आया है, क्रिस्पिक, और इसी को क्लिक करना है। ये ब्रॉड इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है क्रिस्पिक, उसका डायरेक्ट लिंक आ गया, उसको हम क्लिक कर लेंगे। और बताता चलो हम क्रिस्पिक ब्रॉड इंस्टीट्यूट से आज गाइडलाइन डिजाइन करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पैरेलल एक और स्ट्रेटेजी भी है। जो वेबसाइट है वो क्रिस्पर डायरेक्ट है, ये भी अच्छी है, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आज हम प्रैक्टिस उसी की करेंगे। हाँ जी ये पेज किसके पास ओपन हुआ है, गुड जॉब। तो आप ये जितने ग्रीन ग्रीन लगे हुए ये सिलेक्ट कर लें, ये देखें, इसको क्लिक कर लें, इस पर नॉकआउट को क्लिक कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, और इस पर क्लिक करके कंट्रोल वी कर दें, क्योंकि आपके क्लिपबोर्ड में सीक्वेंस एक्सॉन 1 का है, मुझे पता है, मैंने कंट्रोल सी करवाया था आपसे। हाँ किन बच्चों ने कर लिया जी, और नीचे जाके वैलिडेट लिखते कर दें जी क्लिक, गुड जॉब, शाबाश। इधर पीछे भी सीखता है काम, मुझे बुला लें जब भी मसला कोई हो, मैं आ जाऊंगा खुद। वैलिडेट पे क्लिक कर दें प्लीज, वैलिडेट पे क्लिक करें। ये पेज किसके पास आया है, इधर से जी सबमिट पे क्लिक कर दें, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। बच्चे बहुत स्मिटी से सारे बच्चे कर रहे हैं, एक साथ हाथ रेज होते हैं, हैंड रेज होते हैं। सबमिट पे क्लिक किया तो ये किसके पास पेज आ गया, वेरी नाइस। तो यहां पे जी पिकिंग रिजल्ट पे क्लिक कर दें जी, पिकिंग रिजल्ट्स। ये यहां पे ना एक डाउनलोड की चीज आ गई आपके पास, डाउनलोड की चीज आ गई एक आपके पास, इसको खोल लें जी, एंड नोट की नहीं, एंड नोट नहीं, क्या कहते हैं, नोट पैड की फाइल खुल जाएगी। ये नोट पैड की, देखिए टेढ़े मेढ़े सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप, बिल्कुल देखने में पता नहीं चल रहा क्या करना है। इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लें, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लिया जी। जब ये कर लिया, अब एक्सेल खोल के ना, एक्सेल खोल के कंट्रोल वी सिर्फ करना, कुछ नहीं करना। उसमें पहला सेल पहले सिलेक्ट होता है एक्सेल में जब खुलता है, वहां से कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया, यहां पे कंट्रोल वी करना, यहां कहां पे, एक्सेल में आके, एक्सेल में आके कंट्रोल वी कर लें। ये सीधे सीक्वेंस किसके पास आ गया खूबसूरत से, गुड जॉब, शाबाश, वेरी गुड जॉब, एक्सेल में। तो ऑनलाइन जो है ना हमारे पार्टिसिपेंट्स, उनके लिए भी बताता चलूं, ये लंच ब्रेक हम थोड़ी देर के लिए वक्फा लेने जा रहे हैं। So after the lunch break, we want to continue the session. So this session was in between, in progress. We were actually designing the CRISPR with the help of CRISPR from the Broad Institute. So we were here on this Excel sheet with the systematically arranged sequences in the column T. And there are some complementary sequence guide RNA designed by the CRISPR on the sense strand, and some are designed on the antisense strand. That are designed on the sense strand, they are directly used for the cloning. But the guided RNA that are designed on the antisense strand, first of all their reverse complement is taken, then they are cloned, then they are utilized. So simply we do the simple practice today. We use the guided RNA that the software designed for us on the sense strand. Please copy this sequence, then we will move forward. Control C this sequence. तो हमने क्या किया था, इंसेंबल माउस डर्ट हमने लिखा था गूगल में, पहला लिंक क्लिक किया था हमने कुछ देर पहले। तो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट को आवाज आ रही है मेरी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को। सो इंसेंबल माउस डर्ट हमने लिखा, हमने पहला लिंक क्लिक कर दिया यहां पे,
इसको क्लिक करने से ये वेबसाइट ओपन हुई, यहां पे हमने सीक्वेंस को क्लिक किया, सीक्वेंस को क्लिक करने के बाद हमने स्क्रॉल डाउन किया तो हमने फर्स्ट एक्सॉन कॉपी कर लिया था यहां से, फर्स्ट एक्सॉन ऑफ माउस दैट जीन फ्रॉम द माउस, फर्स्ट एक्सॉन कॉपी कर लिया था। फिर हमने क्रिस्पिक लिखा और ब्राउन इंस्टीट्यूट के इस लिंक पे क्लिक किया जो लाइनों वाला आइकन नजर आ रहा है आपको। सो दिस पेज of the CRISPR from the Broad Institute was opened and we selected these parameters. And we selected the bulk sequence and we pasted the bulk sequence that we previously copied, the exon 1 of the TUT gene. We pasted here, Control V. Then we validate it, then we submit it. After the submission, we were for the picking results and the downloaded file was opened in there. That was the downloaded file, that was the notepad file, not correctly arranged in columns, all the sequences. We Control A, Control C and Control V in the Excel we did, and the sequences were arranged here. We came into the T column and we selected the second sequence, second guide RNA that was designed on the sense strand. We move forward. Now we'll write in the Google next new tab reverse complement. Reverse complement. Reverse complement, and please click the first link. Reverse complement. So this one is open. Please whatever is written there, delete that one and do the Control V. Your copied sequence will be pasted here then. जी बिल्कुल, क्यों नहीं? यहां से reverse complement लिखेंगे गूगल में हम, तो जब सर्च करेंगे तो पहला लिंक हम क्लिक कर देंगे रिवर्स कंप्लीमेंट bioinformatics.org। जब आप अपना सीक्वेंस पेस्ट करके एंटर करेंगे ना रिवर्स कंप्लीमेंट, ये आएगा उसका, ये आ गया आपका, शाबाश। जो पहला सीक्वेंस अभी तक क्लिपबोर्ड में आपके मौजूद है उसको वर्ड फाइल में पेस्ट कर दें पहले, फिर इसको कॉपी करके इसको भी उसके नीचे पेस्ट कर दें, कुछ यूं ये भी पेस्ट कर दें जो पहले से कॉपीड है, फिर ये जो नया आया है उसके बाद कॉपी करके इसको भी पेस्ट कर दें ताकि पहला कॉपी किया हुआ वेस्ट ना हो। पहले जो कॉपी करके लाए थे आप, कहां से लाए थे मैं दोबारा बोल देता हूं। आपने ये जो सीक्वेंस कॉपी किया था ये भी पेस्ट कर दें यहां पे, और इसका रिवर्स कंप्लीमेंट जो आएगा वो यहां पे पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी। हम जी जब इस पे गए थे नोटपैड की फाइल से कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया, एक्सेल में कंट्रोल वी किया, इसके टी कॉलम में गए, ये पे गाइड ने जो डिजाइन किए हैं टी कॉलम में गाइड आरने हैं, बाकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने सेकंड गाइड आरने सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया इसको, जो कि सेंस स्ट्रैंड पे डिजाइन किया गया था, सॉफ्टवेयर ने डिजाइन करके दिया था हमें। इस सीक्वेंस को भी यहां पेस्ट कर दिया और रिवर्स कंप्लीमेंट सॉफ्टवेयर से जो रिवर्स कंप्लीमेंट आया ये वाला, इसको भी यहां पेस्ट कर लिया। आपने कर लिया क्या? तो चूंकि हम जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसको शुरू से ब्लू कलर में शो कर रहे हैं, मैंने यहां पे भी उसी में मास्टर से ब्लू कलर में शो किया है सीक्वेंस। तो ये जो इसके पीछे, अब मैं आपको रियल एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बता रहा, लेकिन आपको बताऊंगा करते कैसे हैं। ये जो टॉप वाला स्टैंड है इसके साथ आप CA लगा लेते हैं और बॉटम जो है इसके साथ लगा लेते हैं CCC लगा लेते हैं, और ये दोनों प्राइमर्स आप बाय करते हैं कंपनी से। जो गाइडर ने डिजाइन किया जाता है, जो क्रिस्पिक ने करके दिया सेंस स्ट्रैंड पे, उसके पीछे आपने क्या लिखा, CA लिख दिया उसके पीछे, और जो इसका रिवर्स कंप्लीमेंट ये नजर आ रहा है इसके साथ आपने CCC लिख दिया। तो जब ये लिख देंगे कंपनी से बाय करेंगे आप, इसका आप 10 माइक्रोमोलर सोल्यूशन एक तैयार करेंगे और दोनों को मिक्स करके आप उसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे, फिर स्लोली डिक्रीज करेंगे। स्लोली डिक्रीज करने से वो एंटी पैरेलल बाइंड कर जाएंगे, जिस तरह डीएनए एंटी पैरेलल बाइंड करता है, वो कुछ इस फॉर्म में एंटी पैरेलल बाइंड करेंगे जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि बॉटम स्टैंड टॉप का कंप्लीमेंट था, रिवर्स कंप्लीमेंट था, तो ये देखिए कंप्लीमेंट बेसिस हैं, जी का सी, सी का जी, टी का ए, जी का सी, ये एक दूसरे के यूं बाइंड कर जाएंगे। और जो आपने एक्स्ट्रा बेसिस ऐड की थी वो इस तरह ओवरहैंग की फॉर्म में अपीयर हो जाएंगी। ये देखें जो एक्स्ट्रा बेसिस थी वो ओवरहैंग की फॉर्म में अपीयर हो जाएंगी। ये जो एक्स्ट्रा बेसिस लगाने का मकसद बेसिकली ओवरहैंग जनरेट करना था ताकि ये क्लोनिंग में जाके एग्जैक्टली वहां पे लाइगेट किया जा सके, लाइगेशन को पर्पसफुल बनाने के लिए। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बता रहा, ये एक्सपेरिमेंट काफी लॉन्ग होता है, जस्ट मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। तो
बेसिकली ये वाला जो गाइड आर ने है इस लोकेशन पे डिजाइन किया था सॉफ्टवेयर ने, और ये उसके देखें ये एनजीजी है, एजीजी, ये एनजीजी है, इसके राइट अप स्ट्रीम उसने 20 मर लेके ये गाइडर ने हमारे लिए सिलेक्ट किया था। तो उसके बाद एक ये रिएक्शन है, आपने जो ओलिगो बाई कंपनी से बाई करेंगे प्लाज्मिड, जो आप ओलिगो बाई करेंगे ओवरहैंड वाले इंजाइम BBS1 लाइगेज इंजाइम ये सारा एक साथ में डाल देंगे, और जो ब्लू रीजन होगा वो क्लोन हो जाएगा और वो इस प्लाज्मिड की फॉर्म में आ जाएगा एक ही रिएक्शन के अंदर, रिस्ट्रिक्शन भी और क्लोनिंग भी हो जाएगी। तो ये वही पिक्चर है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। तो we were actually specialized in making the genetically engineered mouse models for the study of human diseases. Previously we used to take 1 to 1.5 years for knockout of one gene. After the advent of CRISPR-Cas9 technology, this is even possible, the knockout of one gene even is possible in 2 to 3 months. So the CRISPR technology has shortened the experimental time a lot. It is not only the time efficient but also the cost efficient, the CRISPR-Cas9 technology. Any gene actually can be edited, any kind of mutation can be subjected to the genome. Even this kind of mutation can be subjected even in the grown cell line, but also it can be used in the gene therapy in the living animals. So this is the real data from our lab. See, top one, this strand is the wild type allele, the natural one that is already present in your body, the wild type allele. After we use the CRISPR, it make a double strand cut, and during the emergency there were several types of mutations, deletions were appeared. For example, in the mouse, F1 mouse, the newborn with the mutation, it was with the mutation of deletion of 11 base pairs. Another mouse was with the deletion of 57 bases. So deletion of bases along with the name of the individuals are shown with the del. So by the use of CRISPR, here you can see 11 base pairs were deleted. Here one base was added plus one has been returned. So this way data of knockout alleles are presented. इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। यहां पे देखिए 24 बेस पेयर डिलीट हुए हैं, del 24 इज शोन। अब कोई भी गिन ले, del 11 गिन लेते हैं, जैसे हम देखिए गिनता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 bases were deleted as compared to the wild type allele, the original one. So del 11 is written here to show the type of mutation. Type of mutation क्या है? del 11 here. So this is the real data, and again from our lab. So I don't teach you, this is a bit complex. So we move to the next session. Phylogenetic tree we make. आप सब जो हैं, आपके पास मेगा 6 सॉफ्टवेयर मैंने दिया है, तो आप उस पर डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। सेशन 3 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। NCBI BLAST लिखिए और पहला लिंक क्लिक करें। मुझे नहीं पता एक स्लाइड कहां गई है। NCBI BLAST लिख के पहला लिंक क्लिक करें तो ये पेज आएगा, NCBI BLAST। सुबह हम NCBI प्राइमर ब्लास्ट लिख रहे थे, अब NCBI BLAST लिखना है, NCBI BLAST। अच्छा जी, इसमें जो ब्लास्ट एक्स पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। किसी के पेज ओपन हुआ है इस तरह का? गुड जॉब, गुड। आपके पास EA24 का सीक्वेंस पहले से मौजूद है, सुबह से हम निकाल रहे हैं। इस सीक्वेंस को सिर्फ इतना ले लें, यहां से लेकर यहां तक कॉपी कीजिए प्लीज। कॉपी करके जिन्होंने ब्लास्ट एक्स पे क्लिक किया था ना, ये ब्लास्ट एक्स की विंडो नजर आ रही है, ये देखिए ब्लास्ट एक्स लिखा हुआ है, यहां पे पेस्ट कर दें। तो यहां पे ब्लास्ट का बटन दबा दें बस। जब ब्लास्ट का बटन दबाया तो ये पेज किस किस का ओपन हुआ है? गुड जॉब, गुड, वेरी नाइस। जेनपेप्ट पे क्लिक कर दें। जेनपेप्ट आ गया आपका, आप भी पहुंच गए। जेनपेप्ट पे क्लिक कर दिया आपने, वेरी नाइस, वाओ। जेनपेप्ट पे भी क्लिक कर दिया, गुड। बच्चे बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। बच्चों ने जिन्होंने जेनपेप्ट पे क्लिक किया है वो इस पेज पे पहुंच गए हैं। और समरी पे क्लिक करके फास्टर टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो समरी पे क्लिक करने से ये पेज आ चुका है। इसमें से देख लें 10-20 सीक्वेंसेस कॉपी कर लें आप।
गुड, ये सारे कॉपी करना, सारे कर लेंगे, टेक्स्ट की फॉर्म में है ये। आगे आप मेगा 6 खोल लें, जो सॉफ्टवेयर आपके पास है, कोई इंस्टॉल किया है तो मेगा 6 खोल लिया आपने। अच्छा, उसके बाद अपना अलाइन पे क्लिक करें उसके, और एडिट बिल्ट अलाइनमेंट पे कर दें। उसके बाद क्रिएट न्यू अलाइनमेंट आएगा, फिर यहां पे क्लिक कर दें, फिर इसको प्रोटीन पे क्लिक कर, फिर आपने कंट्रोल वी सीक्वेंस करना है, ये पेस्ट करना है। और कल जिसका सॉफ्टवेयर नहीं कंट्रोल वी हो रहा था, उन्होंने बंद करके दोबारा सॉफ्टवेयर चलाया था, फिर हुआ था। कंट्रोल वी करके देखें हो रहा है पेस्ट कि नहीं हो रहा। हो गया पेस्ट, गुड जॉब। जिन्होंने क्लिक किया कलरफुल सा आ गया इस तरह का किसी के सबका, वेरी नाइस जॉब, वेरी नाइस। उसके बाद आप डेटा में जाके फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पे क्लिक कर दें प्लीज। चूंकि जो ब्लास्ट एक्स किया था आपने, उसने आपके जो कोडिंग सीक्वेंस को प्रोटीन में कन्वर्ट करके अलाइन किया था, और जो आप आउटपुट आया था वो प्रोटीन का सीक्वेंस था। तो यहां पे हम फाइलोजेनेटिक टीबी प्रोटीन सीक्वेंस के अगेंस्ट डिजाइन करेंगे। डेटा पे जाके फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पे क्लिक कर दें प्लीज। अच्छा, अब ना पिछली विंडो में वापस चला जाएगा वो। ये दो विंडो से ना, हमने यहां से अलाइन से शुरू करके नई विंडो में जाकर डाटा पेस्ट किया, तो वहां पे जब हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे तो इस विंडो में वापस आ जाए उस क्लिक करने के बाद। ये नजर आ रही किसी को विंडो, ये वाली इसी सॉफ्टवेयर की विंडो है, उम्र नजर आ रही है, गुड जॉब। फाइलोजेनी पे जाके सेकंड ऑप्शन क्लिक कर दें, ये नई विंडो ओपन होगी। इसमें देख लें फाइलोजेनी जो टेस्ट लिखा है, यहां पे बूटस्ट्रैप मेथड 100 लिख दें, कुछ पैरामीटर को सेट कर सकते हैं आप, डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं। बेसिकली आपने कंप्यूट पे क्लिक करना है, ये सेट करने के बाद कर लिया। क्या आया, घुमाएं, वाओ यू मेड, गुड जॉब जी। मैं कर देता हूं जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक स्टूडेंट ने कर लिया सक्सेसफुली एंड तक। हमने ये सबसे शॉर्टेस्ट सेक्शन था फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने का, हम अगला सेक्शन अब करने जा रहे हैं जी, लास्ट सेक्शन जी हमारा। और इसमें वो एक्सपेरिमेंट इंक्लूड किए हैं जो मैंने खुद किए थे, जिससे मुझे खुद सक्सेस मिली थी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव इंक्लूडेड इन दिस वर्कशॉप आर दोज थिंग्स दैट आर इन माय एक्सपीरियंस दैट गेव मी सक्सेस ड्यूरिंग माय करियर, ड्यूरिंग माय एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली। तो ये लास्ट सेशन है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली लास्ट सेशन जो है ये मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के बारे में है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यू कैन से। तो जो सबसे सिंपलेस्ट क्लोनिंग कहलाती है वो टीए क्लोनिंग होती है। यू ऑलरेडी नो फ्रॉम दिस मॉर्निंग, whenever you have to do PCR, you usually use the tag. जब आप PCR करते हैं तो आप टैग यूज करते हैं। टैग इज ए डीएनए पॉलीमरेज, टैग इज ए डीएनए पॉलीमरेज, द फेमस वन यूज्ड इन एवरीवेयर and the most common DNA polymerase. So this tag DNA polymerase, when it amplifies the fragment, it adds an extra A at the 3' end. ये पूरा फ्रेगमेंट एम्पलीफाई कर देगा पीसीआर की मदद से, लेकिन एक्स्ट्रा ए ऐड करता है कौन, टैग डीएनए पॉलीमरेज। But there is another enzyme that is used, but less frequently used, is the PFU enzyme. It does not do anything, but it simply amplifies the fragment according to the primers provided. Because tag is adding extra A at the 3' end of both the strands, so there is a A overhang on both sides of the amplified PCR product when we use the tag DNA polymerase. So there are commercially available plasmids that do have the extra T overhang. So this extra A containing are then become compatible with this plasmid, and we simply mix that product with this plasmid and we add DNA ligase enzyme. This way the DNA from two sources are ligated together and joined together. This is called the TA cloning, the simplest cloning this is. We are in the section of molecular cloning, and this is the simplest cloning, the TA cloning. When we want to make the recombinant proteins, artificially we want to make some enzyme, some commercial products, some industrial enzymes, or something. To make any protein, any enzyme, we need to have its coding sequence. Just like we did extract the coding sequence of EA24 this today,
many times. So this coding sequence do require a promoter sequence for the transcription and then the translation. There is always the transcription first and then the translation, then a protein is made from the coding sequence. So this promoter is always upstream of the coding sequence of the enzyme or the protein you want to synthesize by the recombinant DNA technology. And there needs a specific Kozak sequence that must be very next upstream of the coding sequence that is required for the proper transcription. So that's the importance of Kozak sequence when you want to make the recombinant protein. So these are the different elements of the plasmid. So recombinant DNA technology revolves around, most of the time, revolves around the plasmids. Plasmids are the circular DNA. You are the eukaryote. You do not have the circular DNA in your cells, but you have this kind of chromosomes. But the E. coli does have one chromosome, but also it has the capacity to retain and to multiply the circular DNA, that those are called the plasmids. Circular DNA, those are called the plasmids. So this is the one of the plasmid that is making the backbone most of the time to make the recombinant protein, the enzymes. So you can see here clearly the promoter is here, the CMV promoter, that is having downstream of it the coding sequence of, for example, some enzyme. Here in this case, this is the human EI24, and the poly-A signal is also required for the proper protein synthesis. The poly-A tail signal is required. I'm telling you how the plasmids look like, what are the important elements of the plasmid, so that if you want to deal with the plasmid, you must know the function of every of the element. So the promoter is required for the transcription, then the coding sequence, poly-A tail is required. This much system is making for the protein synthesis. What the rest of the things are then? बाकी चीजें फिर क्या हैं? So this is the MP ampicillin resistant gene, and then the MP promoter. So in the bacteria, whenever this plasmid resides, this MP gene is translated in a way that the ampicillin antibiotic cannot kill those bacteria that are having this plasmid, so as we can multiply 100 and 100 and 1,000 and millions of times this kind of plasmid inside the bacteria, because those bacteria will not be killed, and all those bacteria that will not be multiplying this, that will not be having this plasmid, will be dead. To selectively multiply this plasmid, we do need antibiotic resistant gene in this plasmid. So this is the function of this element. So this is the ORI. Usually the puck origin of replication is used. So this sequence has the ability that the bacterial machinery recognizes this ORI sequence and makes copies and copies inside the bacteria. Even one bacteria can have the 600 to 700 copies because of this origin of replication. Even if you send one plasmid copy, so there will be 600 or 700 copies in one bacteria, and you know in the culture media there may be many bacteria, and there will be many times this plasmid will be multiplied while being inside bacteria. So this one is the eukaryotic selection marker. This is the prokaryotic selection marker MP, and this is the eukaryotic neogene. यूकैरियोट, आप यूकैरियोट है सारे, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया माइक्रो वाले ज्यादा जानते हैं मुझसे ज्यादा प्रोकैरियोट क्या होते हैं. So I told you different elements. So PCR is a fantastic. PCR can do several things, like it can join two fragments easily. For example, if you have two fragments, I make the real example, not real, better example for you. For example, we have this one fragment, I'm making another fragment. To distinguish sequence of both fragments, I made their shape different. This is a specific sequence shown by the straight line, and the curvy lines are showing the another sequence. If I want to join these two fragments by the use of PCR, what will I do? I can do a strategy. I will design forward primer here.
I can design forward primer here, and I can design a reverse primer here with this region. With this region, I can design. And one primer I can design maybe this. If I design these 4 primers, 2 fragments can easily be joined. क्योंकि जब ये एम्पलीफिकेशन होगी तो जो नया फ्रैगमेंट बनेगा इस प्राइमर की मदद से उसमें ये रीजन कॉमन आ जाएगा. ये रीजन जब कॉमन आएगा, दिस होल फ्रैगमेंट विल एक्ट एज ए प्राइमर टू ज्वाइन दिस फ्रैगमेंट टू. इस तरीके से हम 2 फ्रैगमेंट्स को जोड़ सकते हैं. हम 3 फ्रैगमेंट्स को भी जोड़ सकते हैं. 3 फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए भी 4 प्राइमर स्ट्रेटजी एनफ होगी. जैसे ये एक फ्रैगमेंट है और मैंने इस फ्रैगमेंट का सीक्वेंस आपके लिए रेड में दिया है. ये एक और फ्रैगमेंट है, ये मैजेंटा कलर में मैंने फ्रैगमेंट दिया है. ये पिक्चर फॉर्म में, कार्टून फॉर्म में मैंने यहां दिखाया है. फिर ये ब्लू में फ्रैगमेंट, ये ब्लू में दिया है. इफ आई वांट टू ज्वाइन दीज 3 फ्रैगमेंट्स with the addition of no extra bases, what will I do? I will design forward primer somewhere here, 20 mer long, and the reverse primer I will design here with some basis from this pink area. And then what will I do? I will design forward primer here on the blue with pink area taken from here, and the reverse primer from somewhere here. So when this amplification will be done, this pink area will appear here. That will be responsible for the joining, for the amplification, and then joining of these 2 fragments. In the same way, when this area will be amplified, this with all 3 fragments can be joined together by the use of simple PCR. Joining DNA from more than one species is called the recombinant DNA, and the technology is called the recombinant DNA technology. So I'm recombining DNA. I want to here giving you strategy, how can you combine 3 DNAs? So if you want to do practice, you can design the primer. I have given you primers here. I have already designed, but I want you to practice if you want, if you can, if you have energy. You can take 20 mers simply from here. I have simply highlighted here, and also in the Word file, and this will serve as this F1 primer. When I will design its reverse primer, what will I do? No, this is the forward primer. This is the F1. F1 forward primer, this is. And this 20 mer will be taken along with these bases will be taken. And when the reverse complement of the top strand is taken, it acts as a reverse primer. It acts as a reverse primer. So if you can design a reverse primer for me, I will be more than happy. तो आप मेरे लिए एक रिवर्स प्राइमर डिजाइन करें. अगर मैं चाहता हूं यहां से लेके यहां तक फ्रैगमेंट एम्पलीफाई करना है, मैंने सिर्फ एक फ्रैगमेंट एम्पलीफाई करना है, तो आप में से कोई एक बंदा है ना, मुझे रिवर्स प्राइमर डिजाइन करके दिखा देंगे. आप फॉरवर्ड प्राइमर तो सिंपली क्या होगा, 20 मर इधर से ले लेंगे, फॉरवर्ड प्राइमर हो जाएगा. अगर रिवर्स करना है तो इतना सीक्वेंस लेके इसका जो रिवर्स कंप्लीमेंट होगा विल बी रिवर्स प्राइमर. आप में से कोई बच्चा मुझे इसका रिवर्स कंप्लीमेंट लेके दिखाएगा? आपको पता है रिवर्स कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं? हमने रिवर्स कंप्लीमेंट का छोटा सा नहीं एक जो टूल ऑनलाइन यूज किया था, उससे रिवर्स कंप्लीमेंट लेते हैं. आप सारे गूगल पे रिवर्स कंप्लीमेंट लिख के ये जो आखिरी जो 20 मर है ना रेड के, इनको पेस्ट करें और रिवर्स कंप्लीमेंट का बटन दबाएं. वो क्या होगा, वो रिवर्स प्राइमर होगा. वो रिवर्स प्राइमर होगा. टॉप स्ट्रैंड का जब रिवर्स कंप्लीमेंट लेते हैं वो रिवर्स प्राइमर होता है. टॉप स्ट्रैंड का जब रिवर्स कंप्लीमेंट लेते हैं वो रिवर्स प्राइमर होता है. एक स्टूडेंट ने डिजाइन कर लिया जी, रिवर्स कंप्लीमेंट ले लिया है, आपने भी, गुड जॉब. और किसने? तो मैंने कहा कि जो प्लाज्मिड्स आर एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन वी डील विद रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स. मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर इनिशियली expressed in the way of plasmid. Plasmid is made and then the protein is expressed. So we do have a plasmid, for example, this green one, this green area is the backbone of the plasmid, and there is a clone protein, and this protein, name of this protein is TRAF6. TRAF6 is a protein. You even do have the TRAF6 gene and the TRAF6 protein in your body. We are eukaryote. This is eukaryotic protein, and this is human TRAF6 protein. So just like one protein has more than one function, one protein has several domains actually, and every domain
can survive independently and perform function independently. This is the definition of domain. So to understand the function of every domain, if we delete that domain, whatever changes in the organism will occur, that will be the function of that domain. अगर किसी जीन का फंक्शन मालूम करना हो, हम क्या करते हैं, उस जीन को बॉडी में से काट देते हैं, तो जो जो बॉडी में तब्दीली आएंगी वो जीन का फंक्शन होगा. इसी तरीके से अगर किसी डोमेन का फंक्शन मालूम करना है, तो we will delete that domain and express rest of the protein, whatever changes occur in the cell, that will be the function of that domain. आपके अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ डोमेन्स पाई जाती हैं. And every domain interact with different proteins to perform different functions. एक बात जरूर याद रखिएगा कि कभी भी जो भी आपके बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, या कोई भी आप पैनाडोल भी जब खाते हैं, पैनाडोल कभी दूर से नहीं कहती हेलो सर्दी ठीक हो जो. It physically interact with receptors to give you relief. In the same way you are watching me, I am doing work, whatever energy is produced, they are not doing illusion from a distance. Hello, ye kaam kar. They physically interact to perform the function until they cannot perform the function. Physically protein interact with each other. Physically. All drugs physically interact with specific receptor to perform the function. All drugs with specific receptor with specific protein to perform the function. So we were interested to find the function here of the ring domain that has been shown in the black. So I have shown sequence here, sequence of the ring domain in the black here. I made this example for you. And this red is shown here, somewhere here. To teach you the cloning strategy, I am mimicking this protein here with the same color. मैं mimic कर रहा हूं. और ये जो ब्लू है ये यहां पे दिखाया गया है. और मैं अब आपको प्राइमर डिजाइनिंग की स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, how to delete a specific domain from the plasmid. How to delete a specific domain from the plasmid. हम कोई भी डोमेन डिलीट भी कर सकते हैं प्लाज्मिड से, ऐड भी कर सकते हैं, टैग भी ऐड कर सकते हैं, अमीनो एसिड भी चेंज कर सकते हैं. अगर कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है डिजीज के लिए, तो हम उसको चेंज करके चेक कर सकते हैं कि वाकई ये उस डिजीज को कॉज करता है कि नहीं करता. So the strategy. So strategy behind the deletion of this black region. I want to tell you strategy. How will you delete this black region? Black region actually here is the ring domain that has been shown here in the black sequence. So to delete this black region, you will design a forward primer that will take like 18 mers from the red and 20 mers from the blue one, totally ignoring the black region. You will design a forward primer. Our purpose is to delete the black region. To delete the black region, we will design a primer that will take 20 mer behind the sequence to be deleted and 20 mer after the sequence to be deleted, totally ignoring this black region. This primer will look like this and will bind like this. This is the original plasmid containing everything. Still the black region have not been deleted, but we are aiming and we have for this purpose designed a primer totally ignoring the black region, taking 18 mer behind the region to be deleted and 20 mer ahead the region to be deleted, and this primer will bind like this. Because red is far away, so red will not be bound, will not bind here. And we will design another primer, the reverse. Because the PCR amplification, it can only be carried out if the forward and reverse both primers are there. And the reverse primer will be designed in a way that 18 mer from the blue region and 20 mer from the red region are taken. This is one of the general strategy. There are some variation, but general strategy is that what I am telling you. And the reverse primer will bind like this. The red is bound here, the blue is hanging, flying in the air. It cannot bind because the blue one is far away. In between the blue and red, there is a black region that is meant to be deleted. When these two primers are used along with the innate, the parent plasmid, the amplification will occur in a way that black region will not be amplified and rest of the all of the plasmid will be amplified, and ultimately we come across after the PCR amplification with a new plasmid
that is devoid, that is not having the black region. Black region is here, the ring domain, and our purpose was to delete the ring domain. And when this plasmid is transformed into the bacteria, something plasmid when sent to the bacteria is called the transformation. Then finally this plasmid is multiplied 600 or 700 times per bacteria and will not have the black region, the ring domain. This way we can, by the simple use of the primer, can delete any domain in the plasmid. This strategy can be used. So this is a fantastic strategy. I don't say you now to design the primers, but I keep on telling you the strategies. I think you are getting interest in such strategies. So we can take the sequence if we want to design. There is another strategy by the use of PCR. PCR can induce a point mutation. Like some of the diseases are due to point mutation. If some point mutation is there, there can be change of the function of a protein, and we want to do the point mutation to check what is the effect of that point mutation. So the strategy for this kind of study first requires the point mutation in the plasmid, and let's do it now. For example, this is a plasmid, and we are interested to change an amino acid somewhere from here into the protein coding sequence. If the protein coding sequence is changed, definitely the codon will be changed and the new amino acid will be made. Because of the point mutation in the DNA, maybe amino acid is changed. So the strategy is that our primer is designed in a way that all the rest of the sequence is same, but where we need the mutation, we introduce the mutation in the primers. We cannot change, for example, this plasmid now, but we want to make new plasmids that are having the point mutation. That point mutation is shown in black here somewhere. You can see two small dots in blacks are shown here. So point mutation actually is introduced into the primer. In the same way, reverse primer is also been introduced with the point mutation. When this point mutation containing primers are used for PCR amplification of these plasmids, the final plasmid that come out after the amplification does have the point mutation. And when we multiply this plasmid in the bacteria, we get the new plasmid that is having the coding sequence with our desired point mutation. So the strategy is here. So we can change whatever sequence we want to change into the original coding sequence. That original coding sequence, by the use of mutated point mutation containing primers, will introduce point mutation into the protein coding sequence. Even we can introduce some new tags. If we want to introduce the new tags, it's possible. We can introduce some extra bases into the plasmids. Actually, I'm not teaching you everything, but I'm trying to inspire you, encourage you, so that you can think in this way in the future, that the things are possible. I'm trying to encourage you. That's why I'm teaching you the strategies. So whatever molecular biology or biomedical research is there, the basis of everything, somewhere directly and indirectly, is based on the designing of primers. We are doing since morning everything with the primers in one way or the another way. So this is enough for today. Okay, thank you very much. So many participants were very late this morning. So what if we take a group photo? Maybe I don't know which place is better. So thank you to the online participants. We are closing the session here.